2022 का ये मैच खेला जा रहा है उमर एसोसिएट के ताउन से। आज का ये मैच नंबर 20 है जो खेला जा रहा है और ये बहुत ही अहमियत का हामिल है दोनों टीमों के लिए। उमर एसोसिएट और KGA कराची गॉन एसोसिएशन के बीच कराची गॉन टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं। आज के मैच को सरप्राइज कर रहे हैं एम्पायर रियाज खान, एम्पायर मोहम्मद शकील, जबकि हमारे साथ यहाँ थर्ड एम्पायर की प्राइज़ अंजाम देंगे एम्पायर रशीद खान। हमारे साथ हमेशा की तरह ऑफिशियल स्कोर राशिद असलम, हमारे भाई जान जो खासी मुस्तैदी के साथ अपने प्राइज़ अंजाम देते हैं राशिद असलम। और स्पोर्ट स्ट्रीम की टीम हमारे साथ पूरी तरीके से इमरान हमारे राइट हैंड पे। तारीफ़ करना पड़ेगी स्पोर्ट स्ट्रीम की पूरी टीम की, जिस तरीके से कवरेज देते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। लाइव कवरेज देने में महारत रखते हैं स्पोर्ट स्ट्रीम। इनिंग की शुरुआत हो जाती हैं। यहाँ राम रवि और दानिश जिन्होंने सलामी रूप में भेजा गया है इनिंग का आगाज़ करने। हनीफुर रहमान है यहाँ गेंदबाजी की तैयारी में। राम रवि सामना करेंगे हनीफुर रहमान का। हनीफुर रहमान फील्डिंग की सजावट में मसरूफ़। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे, लेकिन इस बार एक खिलाड़ी को और भेज दिया गया है। इस तरीके से 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ हनीफुर रहमान ओवर द विकेट गेंद करेंगे। बाहिनियात के बल्लेबाज को ओवर पिच गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को गिरते देखा, गेंद के पिच तक पहुँचे, अगला कदम इस्तेमाल किया, ड्राइव किया उसे ऑफ साइड पे, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से दूसरे रन की दौड़ में पीछे रह गए और एम्पायर शकील खान ने उंगली फ़ज़ा में बुलंद की और शुरुआत में ही ये बड़ा झटका लगा है KGA बल्लेबाजों के लिए। 1 रन तो पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरे रन की दौड़ में अपने आप को पीछे रखा, उसका पूरा फ़ायदा उठाया फील्डरों ने। हालांकि 1 रन तो दौड़ लिए थे, लेकिन दूसरा रन, ये कमाल तारीफ़ करना पड़ेगी फील्डर की, जो उन्होंने गेंद को लपकते ही डायरेक्ट जो थ्रो की है वो बिल्कुल स्टंप के ऊपर की थी। और इसी किस्म की जो थ्रो होती हैं बासे वक्त फील्डरों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जो हमने देखी यहाँ शुरुआत में ही ये बड़ा झटका दिया है। कौन? नहीं जाने वाले बल्लेबाज दाऊद। राम रवि देखना पड़ेगा आज किस तरीके से अपने बल्लेबाजों को एक बड़ी बुनियाद देते हैं। राम रवि इस टूर्नामेंट के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 सेंचुरियां की हुई हैं।
पिछले मैच में राम रवि ज़रा जल्दी आउट हो गए थे, जिसका नतीजा उनकी टीम को हार की सूरत में मिला था, लेकिन आज देखना पड़ेगा राम रवि के लिए। और इस बार बहुत ख़राब गेंद जिसे कहना चाहिए, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती है इस गेंद को। आखिरी लम्हे थे, देखा रवि ने जाने दिया विकेट कीपर के लिए, जहां एम्पायर शकील का इशारा वाइट बॉल। और इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गिरी गेंद को बैकफुट पर गए, खेला है विद द स्पिन ही खेला है सीधा लॉन्ग ऑफ की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड कर रहे, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन के साथ 3 रन 1 विकेट खोकर केजीए क्लब टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में हनीफुर रहमान गेंदबाजी की तैयारी करते हुए यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को दाऊद को, और इस गेंद अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को बैट और पैड साथ मिलाते हुए इज्जत के साथ खेले फॉरवर्ड शॉट लेग की जानिब, जहां विकेट कीपर ने आके उसे फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। हनीफुर रहमान की गेंद, फिर से अच्छी गेंद, फिर से इज्जत के साथ खेले हैं वापस बॉलर की जानिब। कहना पड़ेगा हनीफुर रहमान ने तकरीबन ताला सा लगाया हुआ है दाऊद के बल्लों पर। और इस बार क्रीज से बाहर आए हैं, हिम्मत दिखाइए, गेंद की पिच तक पहुंचे, ड्राइव किया उसे ऑन साइड पे। तब तक के डीप भी डाउन से फील्डर आके फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। हनीफुर रहमान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 1 रन आउट की सूरत में विकेट भी मिली है यहाँ। उमर एसोसिएट के फील्डरों को अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा था वहाँ। हनीफुर रहमान तैयार अपने, और ये अगेन ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद के स्पिन को देखा, जाने दिया विकेट कीपर के लिए। 1 ओवर 4 रन 1 खिलाड़ी आउट। उसी के साथ पहले ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। पहले ओवर के इख्तिताम पर 4 रन 1 विकेट खोकर केजीए क्लब टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए, ये मैच निहायत अहमियत का हामिल है। लगभग क्वार्टर फाइनल ही है ये। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल की दौड़ में चली जाएगी। वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियाँ वहाँ फॉरेन की ओर से, क्लब रूट की ओर से काशिफ हैं। दाहिने हाथ के गालिबन मध्यम तेज़ गेंदबाज नज़र आ रहे हैं। उनके लिए फील्डिंग की सजावट 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। काशिफ हमारी तरफ आते हुए रंजिम टू अस गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज दाऊद को, और इस बार गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए, जहां विकेट कीपर ने उसे गैदर किया। और वहां एम्पायर रियाज खान की जानिब से वाइट बॉल का इशारा, और एक और रन वाइट के रूप में यहां उमर केजीए क्लब की झोली में। काशिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर हमारी तरफ आते। इस बार गेंद अच्छी गेंद, आउट स्विंगर गेंद, गेंद की उछाल से पूरी तरीके से चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास। खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन से दूर हुए थे। गेंद का कहना पड़ेगा गेंद के उछाल से और गेंद के बाउंस से पूरी तरीके से चूके थे। गेंद विकेट कीपर के पास गई, और एक और डॉट बॉल वहाँ काशिफ की जानिब से। काशिफ फिर से तैयार, दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज। और वहाँ एम्पायर रियाज खान ने कुछ फील्ड में इंटरप्शन देखते हुए डेड बॉल का इशारा किया। रिदम ख़राब हुआ गेंदबाज का।
काशिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इस बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को, जहां एम्पायर के लिए कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, इस बॉल को वाइड करार देने के लिए एम्पायर रियाजुद्दीन के दोनों हाथ खुले। एम्पायर रियाज खान के शुक्रिया। राशिद रियाजुद्दीन का वो 30 साल का दौर हमें एक तारीखी दौर था। वो इस बार स्ट्रेट किया है गली की जानिब, सीधा फील्डर के हाथ में, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। एक कराची जिमखाना की एक 30 साल तारीख में कहना पड़ेगा, एम्पायर रियाजुद्दीन का जो किरदार था वो हमेशा याद रहेगा। यहाँ कम्युनिटी बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करते थे और उस बीच गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद उछाल के साथ ही फिर से खेलना चाहते थे, छेड़ना चाहते थे गेंद को। गेंद गई विकेट कीपर के पास। और यहाँ कहना पड़ेगा जो पिच में उछाल है, जो पिच में बाउंस है, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं काशिफ। काशिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे गली पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए इस बार फिर से अच्छे गेंद, फिर से धीरे से खेले हैं दिफाई अंदाज में। इस बार पॉइंट की जानिब फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शुरुआत से ही दोनों गेंदबाज। पहला ओवर जो हनीफुर रहमान ने किया था 4 रन दिए थे, और अब काशिफ पहले ओवर की अपनी 5वीं गेंद कर रहे हैं और अब तक 2 रन दिए हैं। पूरी तरीके से बैकफुट पर किया है और इस बार अच्छे गेंद उसको अच्छे अंदाज में खेलते हुए दिफाई तरीके से खेला गली की जानिब। फील्डर ने भी वहाँ मुस्तैदी से कहना पड़ेगा फील्ड की बल्लेबाजों को अपनी क्रीज पर धकेला। काशिफ दाहिने हाथ से गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज दाऊद को हमारी तरफ आते हुए, और इस बार गेंद फिर से अच्छी गेंद, इस बार कामयाब हुए हैं थर्ड मैन की तरफ निकालने के लिए। तब तक कि डीप से आके फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और उस 1 रन के साथ दूसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 7 रन 1 विकेट खोकर KGA क्लब कराची गाउन क्रिकेट एसोसिएशन 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल उमर एसोसिएट के ताउन से खेला जा रहा है। ये 2022 का 19वां मैच, 20वां मैच है और ये राउंड का आखिरी मैच है, और जो दोनों टीमों के लिए ये क्वार्टर फाइनल है। जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस ग्रुप से कौन गया? और इस बार अच्छी गेंद, फ्लैटेड गेंद थी, धीरे से टर्न किया है ऑन साइड पे। तब तक के विकेट कीपर आके गैदर करते गेंद को, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और एक और डॉट बॉल वहाँ हनीफुर रहमान की जानिब से। हनीफुर रहमान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ये गेंद फिर से अच्छी गेंद, ऑफ ब्रेक गेंद, मिड स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को दिफाई अंदाज में खेला है कवर की जानिब, जहाँ फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। हनीफुर रहमान ये गेंद फिर से ऑफ ब्रेक गेंद, इस बार बैकफुट पर जाते हुए खेले हैं कवर की जानिब, फिर से कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। हनीफुर रहमान अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, ताला सा लगाया हुआ है बल्ले पर दाऊद के, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। जो ही कदमों का इस्तेमाल करते देखा बल्लेबाज को, गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली की और गेंद बल्लेबाज छू के लंबी हिट खेलना चाहते थे। और एक और डॉट बॉल वहाँ हनीफुर रहमान की जानिब से। हनीफुर रहमान
शुरुआत से ही खासी किफ़ायती से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, फिर से दिफाई स्ट्रोक खेला है बैकफुट पर जाते हुए। इस बार फिर से फील्डर के हाथ में गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। हनीफुर रहमान तैयार, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे 5 ऑन साइड। इस बार खेल दिया है, मिडिल स्टंप से पिक किया है खूबसूरती के साथ, वहाँ डीप मिड ऑन के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ तीसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 11 रन, 1 विकेट खोकर केजीए क्लब टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है और ये मैच नंबर 20 है जो कि राउंड का आखिरी मैच है। इस मैच के बाद डिसाइड होगा सेमीफाइनल का इन दोनों टीमों में से। बहुत ही अहमियत का हामिल है ये मैच। अच्छी गेंदबाजी की है हनीफुर रहमान ने, 2 ओवर में 8 रन दिए हैं और वहाँ दूसरे एंड से क्लब रोड से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं काशिफ। उन्होंने भी 1 ओवर में 3 रन दिए हैं और दोनों ही गेंदबाजों ने शुरुआत से ही काबू किया हुआ है। लेकिन अभी हम देखेंगे राम रवि जो अभी तक खामोश हैं, अगर राम रवि का बल्ला बोला तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी यहाँ और गेंदबाजों को भी परेशानी होगी। राम रवि जो कि इससे पहले इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियाँ कर चुके हैं, वाहिद 2 सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज हैं इस टूर्नामेंट में। राम रवि के लिए फील्डिंग की सजावट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। ऑफ साइड पे लॉन्ग ऑफ लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, गली पॉइंट कवर और मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पे मिड ऑन, मिड विकेट और डीप मिड विकेट और एक फील्डर फाइन लेग पे जाता हुआ। काशिफ फिर से तैयार, इस बार राउंड द विकेट गेन करेंगे राम रवि को हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से। और इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई, उस गेंद को पूरे खूबसूरत अंदाज में स्टेयर किया है गली की जानिब। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। राम रवि हैं वो बल्लेबाज जो अब तक 2 सेंचुरियाँ कर चुके हैं। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक यहाँ राम रवि का, इम्प्रोवाइजिंग शॉट, क्रिकेट का खूबसूरत शॉट जिसे कहते हैं। जो ही गेंद को ओवर पिच गिरते देखा, अगले कदम पे आए और बल्ले का मुंह खोला गली की जानिब, गेंद बिल्कुल कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए। काशिफ फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे बाहिने हाथ के बल्लेबाज राम रवि को। फील्डिंग की सजावट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। और इस बार फिर से अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार दिफाई अंदाज में खेले हैं। मिड ऑफ की जानिब रन लेने का मौका है बल्लेबाजों के लिए। इनके साथ चलना बाकी बहुत कैसा चलता हूँ। हाँ मुझे पता है ना, मैंने 1 महीने में अंदाजा लगाया। काशिफ फिर से तैयार, अब ओवर द विकेट गेन करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाऊद के लिए। और इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को पुल के अंदाज में खेले हैं। तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और जो ही फील्ड पे झपटते देखा फील्डर को, दोनों बल्लेबाजों ने रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाई और अपने कदम वापस क्रीज में खींचे। काशिफ फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे राम रवि को। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कमाल का शॉट खेला है राम रवि ने। बहुत ही एक आसान
करते हुए इस शॉट को राम रवि की तारीफ़ करना पड़ेगी। जब वो बल्लेबाजी करते हैं और शॉट खेलते हैं उनके लिए शॉट खासा आसान हो जाता है। ये जो ड्राइव किए उन्होंने मिड ऑफ की जानिब बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल प्लेसिंग की है जिसे कहना चाहिए। बल्ले का मुंह खोला मिड ऑफ की तरफ, दिखाया रास्ता डीप मिड ऑफ का 4 रनों के लिए। बहुत ही टाइमिंग वाला और दिलकश शॉट यहाँ राम रवि का। इसके नतीजे में एक फील्ड और ले आए हैं कप्तान ऑफ साइड पे। और इस बार फिर से गेंद, इस बार अच्छी गेंद, और गेंद में बॉक्स था, गेंद में उछाल था। उस गेंद के उछाल के साथ ही अपने आप को उछालते हुए गेंद को दबाया, जहां गेंदबाज ने आके फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। इस बार कमबैक किया था गेंदबाज काशिफ ने। एक 4 चौका खाने के बाद शॉर्ट पिच गेंद थी, तकरीबन कमर की ऊंचाई तक उछल रही थी, उसको दिफाई अंदाज में खेला था। और इस बार टर्न किया है खूबसूरती के साथ, आगे गिरी इस गेंद को शफल करते हुए। तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। राम पहुंचे 12 रन पर 8 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके लगाकर चौथे ओवर के इख्तिताम पर 22 रन, 1 विकेट खोकर केजीए टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए। और अब मौजूदा रन औसत चल रहा है वो 5.50 है। शुरुआत से ही कहना पड़ेगा गेंदबाजों ने खासी किफ़ायती गेंदबाजी की है, खासी हद तक दूर रखा हुआ है केजीए के बल्लेबाजों को अपने, जो उन्होंने एक हदफ सेट किया हुआ है अब तक। लेकिन यहाँ जब तक राम रवि मौजूद हैं तो गेंदबाजों को सुकून नहीं मिलेगा, कोशिश करते रहेंगे। और यहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से हनीफ और रहमान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर दाहिने हाथ से। और इस बार गेंद, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को आखिरी लम्हे तक गेंद के स्पिन को देखा, धीरे से खेला वहाँ मिड ऑफ की जानिब, सिली मिड ऑफ की जानिब, जहाँ फील्डर दूर से है फील्ड की। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और एक और डॉट बॉल वहाँ हनीफ उर रहमान की जानिब से। हनीफ उर रहमान को भी इज्जत दे रहे हैं राम रवि। और इस बार ऑफ स्टंप से लिया है, झपकी दी उनको पूरी तरीके से, पहले पीछे गए फिर शफल किया, फिर देखा गेंद को, गेंद की पिच को देखा, खूबसूरती के साथ खेला वहाँ ऑन साइड पे डीप मिड ऑन की तरफ, पूरे बल्ले के बीचों बीच वो बल्ले का कूदा, वो बल्ले का स्ट्रोक दिखाया राम रवि ने। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हनीफ उर रहमान फिर से तैयार। इस बार हनीफ उर रहमान को चकमा देने में कामयाब हुए थे राम रवि। हनीफ उर रहमान फिर से तैयार। इस बार फ्लाइटेड गेंद को आखिरी लम्हे तक देखा, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, जहां एम्पायर शकील का इशारा वाइड बॉल का। राम रवि खासी समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को खामोश भी रखा हुआ है। और मौका देखकर हरियाणा भी होते हैं, उन्हें अपनी विकेट की अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि पिछले मैच में वो जल्दी आउट हुए तो रिजल्ट ख़राब हुआ था टीम के लिए। इस बार खेल दिया है, उठता हुआ शॉट सीधा स्ट्रेटर पोजीशन पे, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे गेंद उड़ान भरती हुई डीप पर 6 रनों के लिए। एम्पायर शकील का इशारा, भरपूर क़ुव्वत वाला शॉट कहना पड़ेगा राम रवि, जिसके लिए वो इस टूर्नामेंट में मशहूर हैं। दिखाया वो हाथ राम रवि ने। हनीफ उर रहमान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार खासी बाहर गेंद थी। इस बार उन्होंने अगर छोड़ देते तो ये भी वाइड की सूरत इख्तियार करती, लेकिन खेला, कट किया इस आस में कि शायद गैप बन जाए, लेकिन सीधा फील्डर के पास
रन लेने का कोई मौका नहीं है। हनीफुर रहमान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार फिर से ऑफ स्टंप की लाइन में टपकाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई, इस बार फिर से उम्मीद से छोड़ा था कि शायद एम्पायर कुछ तवज्जो दें, लेकिन एम्पायर अपनी जगह अनमूव। राम रवि सामना करेंगे हनीफुर रहमान का, और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को मिडिल स्टंप से पिक किया है, पुल के अंदाज में खेले डीप मिड ऑन की तरफ। तब तक के फील्डर फील्ड करते हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और उस एक रन के साथ 34 रन 1 विकेट खोकर KGA क्लब टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए राम रवि खेल रहे हैं। 23 रन पर 14 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट राम रवि का 164 का है, और कहना पड़ेगा कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं KGA के बैटिंग लाइन में। राम रवि क्रीज पर मौजूद हैं, और जब तक वो मौजूद हैं तो बड़ी आस होगी उनके बल्लेबाजों को, बड़ी उम्मीद होगी, बड़ी धारस होगी। काशिफ फिर से तैयार वहाँ क्लब रोड की ओर से, दाहिने हाथ के मदम तेज गेंदबाज दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे राम रवि को। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। छह खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे, और इस बार गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को टर्न करना चाहते थे रवि। गेंद की लाइन से दूर थे, गेंद गई विकेट कीपर के पास, जहां एम्पायर रियाज खान का इशारा वाइड बॉल का। काशिफ फिर से तैयार हमारी तरफ आते हुए, और इस बार गेंद अच्छी गेंद उछाल के साथ ही राम रवि ने उसे खेला है, रास्ता दिखाया है थर्ड मैन का 1 रन के लिए। और इस पिच पे खासा उछाल मौजूद है, खासा बाउंस मौजूद है, गेंदबाज फायदा उठा रहे हैं। काशिफ ने अब तक 2.1 ओवर किया है, 16 रन देके। काशिफ अब ओवर द विकेट गेंद करेंगे दाहिनी हाथ के बल्लेबाज दाऊद के लिए फील्डिंग की सजावट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे, और ये आउट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच जिसे कहना पड़ेगा। गेंदबाज ने अपनी ही गेंद पे लिया ये, और दाऊद कॉटन बोल्ड आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। ओवर पिच गेंद थी, कमान के साथ ना खेल पाए, ऑफ साइड पे ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बीचों बीच लेती हुई गेंद सीधी काशिफ के हाथों में, जहां काशिफ ने बहुत कैच को और आसान करता हुआ इसी के साथ दूसरा झटका यहाँ KGA क्लब के लिए, जबकि उनके एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद है जो राम रवि क्रीज पर मौजूद हैं। पिच में जो जान है, पिच में जो कूदा है, उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं गेंदबाज काशिफ। इस बार कहना पड़ेगा ओवर पिच गेंद की थी, गेंद के पेस में तब्दीली की थी, उससे पूरी तरीके से चूके थे बल्लेबाज, और एक आगे आ गए थे बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन आखिरी लम्हे में गेंद की पेस से पूरी तरीके से चूके और गेंदबाज को कैच दे बैठे। बैट्समैन कौन है पता? काशिफ गेंद करेंगे नए जाने वाले बल्लेबाज को, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं ये, उनके लिए फील्डिंग की सजावट। 5-6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे,
और इस बार गेंद अच्छी गेंद, आउट स्विंगर गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को छेड़ना चाहते थे, गेंद की लाइन से चूके, गेंद गई विकेट कीपर के पास और यहाँ किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर इस बात के लिए तैयार थे। बैट्समैन नेम बता दें। काशिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और बाद अच्छी गेंद, इन स्विंगर गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को पूरे ध्यान से बैट और पैड साथ मिलाते हुए स्लिमिट ऑफ की जानिब खेले, जहां गेंदबाज ने अपनी गेंद पे खुद ही फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं और एक और डॉट बॉल वहां काशिफ की जानिब से। काशिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, साइमन है ये बल्लेबाज और इस बार ड्राइव किया है साइमन ने, बहुत ही डॉली कैच सीधा फील्डर के हाथ में, बैकफुट जाके खेलना चाहते थे, जैसा कि हम कह रहे हैं जो पिच में कूदा है, जो पेस है उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं काशिफ। इस बार फिर से थोड़ा सा वेरिएशन किया अपनी गेंदबाजी में, बल्लेबाज छू के पूरी तरीके से सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में एक कैच दे बैठे और इसी के साथ दूसरी विकेट भी चटकाई है यहाँ काशिफ ने अपने इस ओवर में। 2.5 ओवर कर चुके हैं काशिफ, 16 रन दे के दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है अपनी चलाक गेंदबाजी से और अच्छी मध्यम तेज़ गेंदबाजी जिसे कहना चाहिए, पूरी तरीके से पिच में जो जान है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं काशिफ। शॉर्ट पिच भी गेंदें कर रहे हैं अच्छे पेस के साथ और वेरिएशन करते हैं, धीमी गेंद भी करते हैं जिससे चूक रहे हैं बल्लेबाज। देखना पड़ेगा अब नए जाने वाले बल्लेबाज नए जाने वाले बल्लेबाज सुनील। काशिफ अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं, 1 रन दिया है और 2 विकेटें ली हैं काशिफ ने इस ओवर में। अब एक स्लिप को ले आए हैं, एक स्लिप के साथ इस बार 7 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 2 ऑन साइड पे। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को खेलने की जहमत नहीं की बल्लेबाज ने, जाने दिया विकेट कीपर के लिए और इसी के साथ एक डॉट बॉल काशिफ की और वेल बॉल्ड काशिफ। इस ओवर में सिर्फ 1 रन देके 2 विकेटें चटकाई हैं काशिफ ने और 3 ओवर में 16 रन देके 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है काशिफ ने और पूरी तरीके से बल्लेबाजों को दूर कर दिया है उनके उस हदफ से जो वो जहन में लगाए बैठे हैं। लेकिन वहाँ पूरी उम्मीद है, राम रवि ऐसे बल्लेबाज हैं अगर आखिर तक गए तो इज़्ज़त बख्श मकाम ज़रूर दे देंगे बल्लेबाजों को। यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से हनीफुर रहमान अपनी फील्डिंग की सजावट करते हुए, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे। हनीफुर रहमान ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे राम रवि को। इस बार ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को ध्यान से खेला राम रवि ने धीरे से, तब तक के कवर से फील्डर आके फील्ड करें, मौका नहीं था बल्लेबाजों के लिए कोई रन लेने का। स्कोर अभी भी 36 रन, 3 विकेट खोकर KGA क्लब टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए हनीफुर रहमान की ये गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को बैकफुट पर गए, टर्न किया है उसे डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। तब तक के डीप से फील्डर आते हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। हनीफुर रहमान अब गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, सुनील हैं ये बल्लेबाज जो गए हैं बल्लेबाजी की
जिम्मेदारी संभाल लें, उनके लिए एक खिलाड़ी को ऑफ साइड पे बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ हनीफुर रहमान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, कमान के साथ नहीं खेल पाए। एम्पायर का इशारा देखना होगा, एम्पायर की जानिब से कोई इशारा नहीं, बल्ले का धीपरी हिस्सा लेती हुई गई थी बैकवर्ड शॉर्ट लेग की जानिब, जहां फील्डर मौजूद फील्ड किया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब राम रवि सामना करेंगे। राम रवि के लिए एक स्लिप बढ़ा दी गई है और ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई ऑफ ब्रेक गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए। राम रवि ने 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 6 ऑफ साइड पे, एक स्लिप के साथ हनीफुर रहमान गेंद करेंगे राम रवि को, और फ्लाइटेड गेंद फिर से इस आज से जाने दिया विकेट कीपर के लिए। शायद एम्पायर की तरफ से कुछ उम्मीद हो, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ज़्यादा बाहर नहीं गई थी। एम्पायर ने कोई हिलजुल नहीं की वहाँ, और इस बार ऑफ फिर से अच्छी गेंद, फिर से ब्लॉक होल में की गई इस गेंद को अगले कदम पे ड्राइव किया है राम रवि ने। कोई मौका नहीं रन लेने का। एक और डॉट बॉल वहाँ हनीफुर रहमान की जानिब से। हनीफुर रहमान ने भी खासा किफ़ायती ओवर किया है, सिर्फ 2 रन दिए हैं इस ओवर में। वाइल्ड बॉल्ड हनीफ, और पूरी तरीके से कहना पड़ेगा KGA के बल्लेबाजों के बल्लों पर ताला लगाया है दोनों ही गेंदबाजों ने, हनीफुर रहमान और काशिफ ने। हनीफुर रहमान 4 ओवर 22 रन और 5.5 के इकनॉमी से गेंदबाजी की है। हनीफुर रहमान ने अपना स्पेल मुकम्मल कर चुके हैं, और इसके साथ काशिफ हैं दूसरे एंड पे, जिन्होंने 3 ओवर किए हैं। 7 ओवर 7। काशिफ, जिन्होंने 3 ओवर में 16 रन देके 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। वाहिद कामयाब बॉलर काशिफ, और जबकि एक खिलाड़ी रन आउट की सूरत में पवेलियन भेजा था फील्डरों ने। राम रवि सामना करेंगे, वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, राशिद हनीफ आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। राशिद बाइने हाथ के गालिबन लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, एम्पायर और विकेटों के दरमियान से गेंद करेंगे, एंगुलर रन अप टू द विकेट। और इस बार ये गेंद लेग ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई इस गेंद को बगैर लाइन को परखे पुल करना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से, और एक उम्मीद की किरण नजर आई थी गेंदबाज को। ये गेंद फिर से लेग ब्रेक गेंद, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद इस बार अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को शफल करते हुए टर्न किया है शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब। विकेट कीपर ने जाके उसे गैदर किया, जब तक कि फील्ड करके थ्रो करते मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और उस 1 रन के साथ सुनील पहुंचे 2 रन पर। रवि खेल रहे हैं 25 रन पर, 20 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 125 का स्ट्राइक रेट है राम रवि का, जो कि उनके एतबार से एक खामोश इनिंग है। जिस तरीके के वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, अपने आप को रोका हुआ है। और इस बार अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को कट किया है, स्पिन का इंतज़ार किया, गेंद से दूर हुए, धीरे से खेला गली की जानिब, जहां फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और वहां एक और डॉट बॉल हनीफ की जानिब से। हनीफ बाइने हाथ से राउंड द विकेट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इस बार फिर से मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को धीरे से खेले हैं विद द स्पिन मिड ऑन की जानिब, जब तक फील्डर फील्ड करते हैं मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। राशिद हनीफ भी अपने ओवर की शुरुआत खासी किफ़ायती से की है, अब तक सिर्फ 2 रन दिए हैं, खासी हद तक बैकफुट पर रखा हुआ है राम को, और इस बार स्वीप करने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज। देखना पड़ेगा तब तक कि डीप लॉन्ग लेग से फील्डर जाके फील्ड करें, और दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे। जो ही थ्रो करते देखा फील्डर को, दोनों बल्लेबाजों ने हिम्मत ना दिखाई और अपने कदम क्रीज में वापस खींचे। वहाँ अच्छी फील्डिंग कहना पड़ेगा।
डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए आए थे फील्डर। अगली गेंद रवि को, और इस बार फिर से ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को बैट और पैड साथ मिलाते हुए धीरे से कारपेट के सहारे खेले कवर की जानिब, जहां फील्डर ने गिरते पड़ते फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। और इसी के साथ एक पहला किफ़ायती ओवर ख़त्म हुआ। राशिद हनीफ का सिर्फ 3 रन के साथ अपने इस ओवर को इख्तिताम किया है राशिद ने। आठवें ओवर के इख्तिताम पर 41 रन, 3 विकेट खोकर केजीए टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी उमर एसोसिएट के अब तक के गेंदबाजों की, खासी किफ़ायती गेंदबाजी की है और खासी हद तक दूर रखा हुआ है केजीए को उनके हदफ से। मौजूदा रन औसत 5.13 है और यहाँ और वहाँ गेंदबाजी में यहाँ तब्दीली हुई है। हारिस अयाज आए हैं। हारिस अयाज दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक जाना माना नाम हारिस अयाज, और खासी चालाक गेंदबाज हैं। और इस बार लेग स्टंप पे उनकी पड़ी गेंद को खेलना चाहते थे, कमान के साथ नहीं खेल पाए, लेकिन वहाँ बैकवर्ड शॉट लेग के फील्डर आए, उन्होंने 1 रन हासिल किया। हारिस अयाज दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज। हारिस अयाज के लिए फील्डिंग की सजावट राम रवि के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, और अभी हारिस अयाज का हम कहेंगे, हारिस अयाज की जो गेंदबाजी का एक्सपीरियंस है उसका टेस्ट है राम रवि के सामने। और इस बार जैसे कि हम कह रहे थे ये टेस्ट है हारिस अयाज का, राम रवि ने दिखाया है अपना वो बाजू, वो हाथ जो जिसके लिए मशहूर हैं। फ्लैटेड गेंद को बिल्कुल स्ट्रेटर पोजीशन पे खेला है, ओवर दी बॉलर हेड, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आते ही राम रवि ने इस्तकबाल किया है हारिस अयाज का। इस वक्त गेम पूरी तरह से अपने हाइप पर होगा क्योंकि हारिस अयाज का एक्सपीरियंस, राम रवि की फॉर्म। और इस बार राम रवि ने खेला है, देखना पड़ेगा। इस बार फिर से गैप में पूरी तरीके से इस्तकबाल किया है राम रवि ने। मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहे थे वो हारिस अयाज की गेंदबाजी का। आते ही झपटे हैं चौकों के लिए राम रवि, और यहाँ हारिस अयाज जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को इस तरीके से रफ ट्रीट करना खासी परेशानी की बात है हारिस अयाज के लिए और फील्डरों के लिए। अब 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं इस बार, एक स्लिप के साथ अभी भी गेंद कर रहे हैं, हालांकि 2 छक्के खा चुके हैं। और इस बार खेल दिया है, देखना पड़ेगा, मिडिल स्टंप से उठाया है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एम्पायर शकील खां का इशारा, 4 रन और चौकों की हैट्रिक की है राम रवि ने। जैसा कि हम कह रहे थे, शायद राम रवि इंतज़ार कर रहे थे हारिस अयाज का। आते ही झपटे हैं हारिस अयाज की गेंदबाजी पर। हारिस अयाज जो कि बहुत ही चालाक समझे जाते हैं, पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक जाना माना नाम है, एक्सपीरियंस है। और इस बार अच्छी गेंद थी हारिस अयाज की, कमबैक किया था हारिस अयाज ने, लेकिन इस बार 2 रन दौड़े हैं यहाँ फील्डर की सुस्ती से। जो ही देखना पड़ेगा, ऑफ साइड के फील्डर को दोनों को सुस्ताते देखा। दूसरा रन भी चुराया है ये दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान दोनों बल्लेबाजों की, राम रवि और सुनील के दरमियान। और अब जो साझेदारी हो गई है वो 20 रन की साझेदारी है, और अब तक की बड़ी साझेदारी है, देखना पड़ेगा कहाँ तक है। और इस बार आराम से खेले हैं बैकफुट पर जाते हुए, देखना पड़ेगा। डीप पॉइंट के फील्डर, तब तक के डीप कवर्स के फील्डर जाके डीप पॉइंट पे फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 2 रन का, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और ये खासा महंगा ओवर 17 रन दिए हैं हारिस अयाज ने। कहना पड़ेगा कभी कभी तजर्बा भी जो है वो खासा महंगा हो जाता है। 58 रन। राम रवि ने अपने बल्ले की धार सीधी की है, कहना पड़ेगा इस ओवर में, और ख़तरा महसूस हुआ है अब उमर एसोसिएट के गेंदबाजों के लिए।
क्योंकि बल्लेबाज राम रवि ऐसे हैं, अगर उनको धार लग जाए एक दफ़ा तो बहुत मुश्किल होगा उनको रोकना। देखना पड़ेगा कि हारिस अयाज ने किस हद तक सेट किया है राम रवि को। अगर राम रवि पेशेंट से इनिंग खेलें तो खासी हद तक अभी कामयाब हो चुके हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं अभी, और वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियाँ फिर से हनीफ के हाथ में। इस बार हनीफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फॉर एंड की ओर से फ्लैटेड गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद को टर्न किया है शफल करते हुए ऑन साइड पे, तब तक कि मिड ऑन पे जाके गेंदबाज खुद ही फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और अब यहाँ देखना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है हनीफ के लिए भी, जिस तरीके से राम रवि का हाथ खुल गया है, किस तरीके से दूर रखते हैं राम रवि को लॉन्ग हैंडल के लिए। राम रवि जिन्होंने अपना हाथ सीधा किया है हारिस अयाज के पहले ओवर में, यहाँ देखना पड़ेगा किस तरीके से रशीद, और इस बार अच्छी गेंद थी, उसको उतने ही अच्छे अंदाज पे ऑन ड्राइव करते हुए 1 रन पूरा किया। जूही फील्डर को थोड़ा सा सुस्ताते देखा, दूसरा रन भी पूरा किया, और ये नज़दीकी मामला हो सकता था, लेकिन वहाँ गेंदबाज ने अपनी, कहना पड़ेगा थ्रो तो सही थी लेकिन गेंदबाज होल्ड नहीं कर पाए। अगर होल्ड करते तो मौके जैसी बात होती, लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान राम की और सुनील की, 2 रन चुराए हैं तेज़ी के साथ। वहाँ फील्डर ने तो खैर अपना काम किया था अच्छी थ्रो के साथ, लेकिन गेंदबाज ने होल्ड नहीं किया। अगर गेंदबाज पकड़ लेते और विकेटों पे मारते तो खासा नज़दीकी मामला होता। हनीफ फिर से तैयार, बाहिने हाथ से राउंड द विकेट राम रवि को, और इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उसको पूरी इज्जत के साथ खेलेंगे मिड ऑफ पोजीशन पे, बैट और पैट साथ मिलाते हुए। लेकिन कहना पड़ेगा, तारीफ़ करना पड़ेगी राशिद हनीफ की गेंदबाजी की, राम रवि को जिस तरीके से रोका है, और इस बार बैक फुट पर जाके खेलना चाहते थे। वेल बोल्ड हनीफ। राम रवि पहुंचे हैं 44 रन पर 31 गेंदों का सामना करते हुए। हनीफ की अगली गेंद, इस बार राम रवि ने धीरे से शफल करते हुए 1 रन के लिए खेला है ऑन साइड पे। लेकिन यहाँ हम तारीफ़ करेंगे राम रवि की बल्लेबाजी की, जो कि उन्होंने देखा है अच्छी गेंदों को पूरी इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास है कि वो आखिर तक जाएंगे तो एक इज़्ज़त बख्श मकाम देंगे बल्लेबाजों को, और बहुत ही समझदारी से बारी ले रहे हैं राम रवि, बिल्कुल पेशेंट के साथ, ख़राब गेंदों को के साथ सही सलूक करते हैं, लेकिन अच्छी गेंदों को इज़्ज़त बख्श रहे हैं। इस बीच फिर से अच्छी गेंद हनीफ की, एक और डॉट बॉल। हनीफ ने अब तक 2 ओवर किए हैं, और एक और किफ़ायती ओवर हनीफ का, 4 रन दिए हैं सिर्फ हनीफ ने इस ओवर में। 2 ओवर 7 रन 3.5 के इकनॉमी से गेंदबाजी की है राशिद हनीफ ने। और राम रवि जो कि पिछले ओवर में पूरी तरीके से खुल गए थे, इस बार रोका है, उनके बल्ले पे ताला लगाया है राम रवि के। राम रवि 45 रन की बारी ले रहे हैं, 32 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 140 का स्ट्राइक रेट है रवि का। और हारिस अयाज फिर से तैयार हैं गालिबन अपनी गेंदबाजी के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और फिर से ये बड़ा इम्तिहान है हारिस अयाज का। हारिस अयाज की एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा, किस तरीके से अप्लाई करते हैं राम के सामने। राम रवि जो पूरी फॉर्म में हैं और बहुत ही समझदारी से बारी कर रहे हैं, अपना पेशेंट देखना पड़ेगा किस हद तक पेशेंट है इन बल्लेबाज में। अब तक तो बहुत ही आला बारी ले रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ ख़राब गेंदों को बाउंड्री का रास्ता दिखा रहे हैं। हारिस की अगली गेंद, और इस बार फिर से लिया है मिडिल स्टंप से, देखना पड़ेगा इस बार भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद में उड़ान भरती हुई, मिड ऑन के फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे, गेंद उड़ान भरती हुई 6 रनों के लिए एम्पायर शकील का इशारा। और जैसा कि हम कह रहे थे, शायद राम इंतज़ार कर रहे थे हारिस अयाज का, और इस छक्के के साथ ही राम रवि की शानदार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। राम रवि पहुंचे 51 रन पर 33 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 2 चौके। और इस बार होशियारी से राम रवि ने, कहना पड़ेगा, इज्जत बख्शी गेंद को कट करके। यहाँ हारिस अयाज की भी चालाकी कहना पड़ेगा, जो ही राम को
कदमों का इस्तेमाल करते देखा था। गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली की थी, ऑफ साइड ऑफ स्टम्प गेंद की थी, उसको राम रवि खासी समझदारी के साथ हल्के से स्टेयर करके 1 रन के लिए खेला। अगर ये ख़तरे जैसी बात होती, अगर राम रवि लॉन्ग हैंडल पे जाते तो क्योंकि हारिस अयाज खासे चालाक गेंदबाज हैं। और इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट पर गए हैं इस बार। ये सुनील हैं, ये बल्लेबाज, खेला है डीप स्क्वायर लेके जानी, तब तक के फील्डर आके फील्ड करके थ्रो करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और उस 1 रन के साथ KGA क्लब 70 रन 3 विकेट खोकर 11वें ओवर का खेल हो रहा है। और अब स्ट्राइक रेट जो मौजूदा है वो 6.67 हो चुका है। इस बार अच्छी गेंद हारिस अयाज की ब्लॉक होल में की गई। इस गेंद को राम पहले बैकफुट पर गए थे, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली देखी, आहिस्तगी के साथ खेला वापस हारिस अयाज की जानिब, जहां हारिस अयाज ने फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। हारिस फिर से तैयार, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज। इस बार रवि ने रिस्क लिया था इस शॉट गेंद पे, गेंद अच्छी थी लेकिन स्वीप करने में कामयाब हुए निचले हिस्से से। तब तक के डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। हारिस अयाज ने इस ओवर में अपने आप को खासा कमबैक किया है और अब तक सिर्फ 9 रन दिए हैं, सिवाय वो छक्के के बाकी 3-4 गेंदें किफ़ायती गेंद दिए हैं। और इस बार फुल टॉस और ये वो आउट, क्लीन बोल्ड। बहुत ही आला गेंदबाजी, हम जिस तरह से कहते हैं हारिस अयाज को, चालाकी से लॉन्ग ऑफ गेंद दी थी, वेल फ्लाइटेड गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे, गेंद की लाइन से पूरी तरीके से चूके, गेंद उनके मिडिल स्टंप से टकराई और एक सदमा और एक झटका देते हुए आ रहे हैं सुनील अपने बल्लेबाजों के लिए। और राम हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं सुनील की तरफ कि उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं सुनील, जो कि साझेदारी में एक उम्मीद पैदा हुई थी। चौथे विकेट की सुनील ने एक ख़राब शॉट खेल के, और वहाँ कप्तान को हम दाद देंगे उमर एसोसिएट के 17 रन बटोरने के बाद भी उन्होंने हारिस अयाज को तब्दील नहीं किया। वो जानते थे कि हारिस अयाज ऐसे गेंदबाज हैं, किसी भी वक्त चालाकी के साथ विकेट चटका सकते हैं, जिसका मुजाहरा हारिस अयाज ने अभी अभी किया है। अगले जाने वाले बल्लेबाज इमरान बशीर हैं। एक अच्छी साझेदारी दी थी, लेकिन उसमें बड़ा पार्ट राम रवि ही का था चौथी विकेट की। पैंतीसवां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। ये इस मैच का, इस टूर्नामेंट का 20वां मैच है जो कि खेला जा रहा है। ये लगभग क्वार्टर फाइनल ही है। अगर जो टीम इस मैच में जीतेगी फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियाँ राशिद हनीफ के हाथों में। राशिद हनीफ जो अब तक खासी किफ़ायती गेंदबाजी कर चुके हैं, 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए हैं। गेंद करेंगे राम को, और इस बार अच्छी गेंद धीरे से खेला है शफर करते हुए ऑन साइड पे। तब तक के मिड ऑन की फील्डर जाके उसे फील्ड कर रहे हैं, मौका था बल्लेबाजों को। और यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी राम रवि की, बल्लेबाजी की समझदारी से बारी ले रहे हैं, कोई हैकी पैकी शॉट नहीं खेल रहे, अच्छे गेंदबाज की गेंदों को इज्जत दे रहे हैं। और इस बार कट किया है खूबसूरती के साथ, देखना पड़ेगा। नए जाने वाले बल्लेबाज इमरान ने डीप पॉइंट की जानिब गेंद को स्पिन होने दिया, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेला पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए, और अपना खाता खोला इमरान ने। हनीफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार गेंद करेंगे राम रवि को। इस बार फिर से अच्छी गेंद और उतने ही अच्छे अंदाज में इज्जत देते हुए खेले हैं राम रवि। डीप मिड ऑन से तब तक फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हनीफ, अब तक किफ़ायती गेंदबाजी की है, 2.3 ओवर में 10 रन दिए हैं हनीफ की। गेंद फिर से अच्छी गेंद, फिर से इज्जत के साथ खेले हैं बल्लेबाज। इमरान बैक फुट पर जाते हुए आसानी के साथ
लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन के लिए, और उस 1 रन के साथ 74 रन, 4 विकेट खोकर KGA क्लब टॉस जीत के पहले बारी लेते हुए यहाँ हनीफ राम रवि को, और इस बार राम रवि ने खेला है डीप मिड ऑन की जानिब, फील्डर मौजूद 1 रन के लिए। फिर से किफ़ायती गेंदबाजी की है यहाँ राशिद, जो कि अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, सिर्फ 12 रन दिए हैं। और इस बार अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, जल्दी करना पड़ी थी बल्लेबाज को, लेकिन खेलने में कामयाब हुए हैं ऑन साइड पे 1 रन के लिए। और उसी के साथ राशिद हनीफ 3 ओवर 13 रन 4.33 की इकनॉमी से गेंदबाजी की है। वेल बोल्ड राशिद हनीफ राम रवि जैसे बल्लेबाज को बैकफुट पर रखा हुआ है। राम रवि जो कि 56 रन की बारी ले रहे हैं 39 गेंदों का सामना करके, 6 चौके और 2 छक्के लगा के 143 का स्ट्राइक रेट है राम रवि का। हारिस अयाज यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। हारिस अयाज अब तक 2 ओवर में 26 रन दिए हैं। पिछला ओवर अच्छा किया था हारिस अयाज ने, 1 विकेट भी चटकाई थी चालाकी के साथ। नए बल्लेबाज को पवेलियन भेजा था हारिस अयाज ने। हारिस अयाज दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड विकेट भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। फ्लाइटेड गेंद पे खेला है डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। इमरान ने जब तक के फील्ड करते लॉन्ग डीप से आके फील्डर मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और अब राम रवि सामना करेंगे हारिस अयाज की गेंदबाजी का। और फिर से एक बड़ा मौका है हमें देखने का, हारिस अयाज और राम रवि के बीच जो जंग जारी है बैट और बॉल की, कौन कामयाब होता है इसमें। और इस बार हारिस अयाज लाइन से भटके पूरी तरीके से, ऑफ स्टंप की लाइन में टपक आने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई उस गेंद को राम ने आखिरी लम्हे तक देखा विकेट कीपर के पास जाते हुए। एम्पायर शकील का इशारा, वाइड बॉल का। हारिस फिर से तैयार, और इस बार राम ने खेल दिया है फुल टॉस बनाते हुए। देखना पड़ेगा डीप लॉन्ग ऑन से तब तक फील्डर आए, फील्ड करें। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। अच्छी फील्डिंग वहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर के जानिब से, बिल्कुल स्ट्रेटर शॉट था ये, खासा एरिया कवर किया, गेंद पे झपटे और सिर्फ बल्लेबाजों को 1 रन पर महदूद रखा। हारिस अयाज अब फील्डिंग की सजावट में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। और इस बार अच्छी गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए हल्के से धीरे से खेले सिली मिड ऑन की जानिब, जहां विकेट कीपर गए गैदर किया, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों को लिए। हारिस अयाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार बैकफुट पर गए हैं, जगह बनाई है, सीधा हाथ में खेल बैठे हैं नए जाने वाले बल्लेबाज इमरान। हारिस अयाज की चालाकी की गेंदबाजी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बल्लेबाज जो कि मुस्तनद ना हों, गेंदबाजी में हारिस अयाज ने थोड़ी सी तब्दीली की थी। लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करना आसान नहीं है हारिस अयाज की आगे। ये राम रवि की हिम्मत है जिस तरीके से उन्होंने पहला ओवर बटोरा था हारिस अयाज का। हारिस अयाज अब 2 विकेट चटका चुके हैं और ख़ासी हद तक फिर से बैकफुट पर कर दिया है कराची कौन एसोसिएशन क्लब के बल्लेबाजों को, जिनका इन्हिसार पूरी तरीके से राम रवि पर है। वो क्रीज पर मौजूद हैं, देख रहे हैं अपने सामने बल्लेबाजों को उनका साथ छोड़ते हुए। अब देखेंगे कौन सा बल्लेबाज है जो उनको आखिर तक साथ ले जाएगा, एक बड़ी साझेदारी देगा। अमित रवि नहीं है ना। और आज हम देख रहे हैं केजीए की बैटिंग लाइन में अमित रवि नज़र नहीं आ रहा है, जिसका जी शुक्रिया हमें बताया है यहाँ 13 बैठने की इंजरी है।
अमित को तो ये सेटबैक है केजीए के लिए, ये बड़ा मैच है उनके लिए। उनके पास एक ही बल्लेबाज राम रवि है जो सिंगल हैंडेड लेके जाता है मैच को, लेकिन वो अभी तक मौजूद है क्रीज पर। हारिस अयाज की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, खेलना चाहते थे, बगैर गेंद की लाइन को समझे, चूके और एक डॉट बॉल खेल बैठे वहाँ। हारिस अयाज अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, अच्छा किफ़ायती ओवर किया है अब तक। 2 रन दे के 1 विकेट चटकाई है हारिस ने, हारिस दाहिने हाथ के। और फिर गेंदबाज इस बार उछाल दे दिया है, फिर से देखना पड़ेगा और ये आउट। तीसरी विकेट चटका बैठे हैं हारिस अयाज ओवर में, और वो जो 17 रन बटोरे थे राम रवि का, उसका पूरा इजाला किया है हारिस अयाज ने। 3 विकेट चटका कर अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी में अपने आप को कम बैक किया है हारिस अयाज ने। 3 ओवर 29 रन, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है हारिस अयाज ने। 80 रन 6 खिलाड़ी आउट। वो एक ओवर जो राम रवि ने उनको बटोरा था, उसके बाद से खासा कमबैक किया है हारिस अयाज ने, और उसके कहना पड़ेगा उसके गुस्से में 3 विकेट चटका चुके हैं। नए जाने वाले बल्लेबाज अयाज। और यहाँ हम कहना पड़ेगा हमें केजीए क्लब के जो बारी है वो बल्लेबाजों की, तीनों ही मैचों में हमने देखा है जिस तरीके से राम रवि ने सिंगल हैंडेड ही बल्लेबाजों को लेके चले हैं, खासी हद तक एक्सपोज हुई है उनकी टीम, उनके बल्लेबाज जिसे कहना चाहिए। किसी बल्लेबाज में वो दम नज़र नहीं आ रहा जो राम रवि के साथ कोई खड़ा होके उनको वेलकम करे, उनकी बारी को। वो तनो तन्हाई मुकाबला करते हैं, चले आ रहे हैं तीनों मैचों में। जिन दोनों मैचों में उन्होंने सेंचुरियां की थी वो मैच वो जीत गए थे, जिस मैच में पहले आउट हुए थे वो हार गए थे। अभी ये चौथा मैच है, देखना पड़ेगा ये कब तक लड़ते हैं राम रवि। और वहाँ गेंदबाजी में गालिबन तब्दीली नज़र आ रही है, जाफ़र कुरैशी आए हैं। जाफ़र कुरैशी भी घरेलू क्रिकेट का एक जाना माना नाम है ना। जाफ़र कुरैशी बाएं हाथ से राउंड द विकेट फ्लाइटेड गेंद थी। इस बार राम रवि ने धीरे से खेलते ही ऑन साइड पे 1 रन हासिल किया। और अब हम यहाँ देखेंगे जाफ़र कुरैशी भी खासे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो राम रवि उनको किस तरह से खेलते हैं, राम रवि के लिए बड़ा टेस्ट है। अगर राम रवि ने जाफ़र कुरैशी के सामने जारहाना बारी ली तो शायद अपनी टीम को इज़्ज़त बख्श मकाम तक ले आएंगे, लेकिन जाफ़र कुरैशी भी खासे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, उनको अपना तजर्बा पूरा यहाँ दिखाना पड़ेगा। और इस बार स्वीप करना चाहते थे अयाज पॉल, चूके फिर से डॉट बॉल खेल बैठे हैं वहाँ जाफ़र कुरैशी की। राम रवि दूसरे स्ट्राइक पर खड़े हैं और जाफ़र की गेंदों को जायज़ा ले रहे हैं। और इस बार लेग स्टंप के बाहर इस गेंद को एम्पायर रियाज खान का इशारा वाइड बॉल का। राम रवि बगौर जायज़ा ले रहे हैं जाफ़र कुरैशी की गेंदबाजी का, अपने आप को नॉन स्ट्राइकर एंड पे ले गए हैं। और फिर से एक और डॉट बॉल जाफ़र कुरैशी की। गालिबन हो सकता है राम रवि परख रहे हों पूरी तरीके से गेंदबाजी को, पिच को, और शायद अगले ओवर में कुछ हाथ खोलें। और इस बार रिवर्स अंदाज में खेलना चाहते थे, बहुत ही ख़राब शॉट, गेंद स्टंप से जाके टकराई और अपने बल्लेबाजों को सदमा दे बैठे हैं। गेंद विकेटों से टकराई और उसका नतीजा एक खौफनाक निकला बल्लेबाज के लिए, आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। और ये 7वां झटका कहना पड़ेगा, 7वां सदमा जो कि केजी क्लब के बल्लेबाजों को यहाँ दिया है जाफ़र कुरैशी ने अपनी धीमी गेंदबाजी से। खासी धीमी फ्लाइट के साथ गेंदें करते हैं जाफ़र कुरैशी, उनको लॉन्ग हैंडल यूज़ करना आसान नहीं होता। लेकिन हम एक बात यहाँ कह दें, अगर राम रवि कुछ हिम्मत दिखाएंगे तो शायद लॉन्ग हैंडल, तो शायद उनका किस्मत ने साथ दिया तो एक
बड़ा स्कोर हो सकता है, वरना तो जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, किफ़ायती गेंदबाजी हो रही है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कमबैक करना केजीए के बल्लेबाजों के लिए। अब मौजूदा रन औसत 6.00 नए जाने वाले बल्लेबाज विक्टर रेस अब एक ही जगह लो। डिफेंस हाँ कैप्टन कहाँ है? हाँ हाँ कैप्टन कौन सा? जाफर कुरैशी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाहिनी हाथ से राउंड द विकेट गेन करेंगे, सामना करेंगे। बेटा ये विक्टर है, उल्टा अभी जो खेल रहा है ये भी उल्टा है। इस बार जाफर कुरैशी की गेंद, अच्छी गेंद और पूरी उम्मीद से पैदा हुई थी, मचलते हुए अंदाज में एम्पायर की तरफ देखा था, लेकिन एम्पायर अनमूव। ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। एक स्लिप के साथ जाफर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे, और इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से दिफाई अंदाज में खेले हैं वापस बॉलर की जानिब, और एक और डॉट बॉल वहाँ जाफर कुरैशी की जानिब से, और अच्छा किफ़ायती और जहराना ओवर वहाँ जाफर कुरैशी की जानिब से। पहले ओवर में 2 रन दिए और 1 विकेट चटकाई है। चौदहवें ओवर के अख्तिताम पर 82 रन, मौजूदा रन औसत गिरता हुआ 5.86। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, अगर 2-3 अच्छे ओवर मिल जाएं तो खासी हद तक मैच इधर उधर हो जाता है। हारिस अयाज अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे, देखेंगे किस तरह से हारिस अयाज को ये खेलते हैं। राम रवि पूरी तवज्जो के साथ खेलेंगे मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये हारिस अयाज का आखिरी ओवर है। इस बार अच्छी गेंद थी हारिस अयाज की, ब्लॉक होल भी की गई, इस गेंद को धीरे से खेले बिल्कुल कारपेट के सहारे, लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन के लिए। और अब विक्टर सामना करेंगे। राम रवि पहुंचे 59 रन पर 42 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 140 के स्ट्राइक रेट से। हारिस दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, और ये आउट। जो ही हारिस अयाज खासे चालाक गेंदबाज है, जो ही गेंद को बल्लेबाज को क्रीज से बाहर आते देखा, गेंदबाजी में तब्दीली की, गेंद को लेग स्टंप के बाहर फेंका। बल्लेबाज अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके थे, क्रीज से बाहर आ गए थे, कोई मौका नहीं था वापस जाने का। विकेट कीपर ने पलक झपकते ही उनकी बैल जोड़ाई, और इसी के साथ एक और सदमा और एक और झटका, और अब देर होती जा रही है राम रवि के लिए। अब सिर्फ 2 विकेटें हाथ में हैं, देखना पड़ेगा राम रवि को, अब पूरी तरीके से चार्ज लेना होगा, वरना उनकी ये मेहनत रायगा हो जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट में मेहनत से बल्लेबाजी की है और अपनी टीम को 2 मैच अपनी ही बल्लेबाजी से जिताए हैं। नए जाने वाले बल्लेबाज फराज आए हैं, 83 रन, 14 और हमारे साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में उमर खान आए हैं। हम उमर खान को आगे की कमेंट्री अंग्रेज़ी में जारी रखने की दावत देंगे। नाउ ओवर टू उमर खान। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg. Very important match. The last game
of the league stage. Group stage last match, Omar Associates facing off KGA. Winner will qualify for the semi-final, and for now things are looking very tough for KGA club. They're 83 for 8. Ram Ravi batting on 59, but the irony is he's the only man who got some runs. The entire team faltered today. They still have 6 overs left. Ram still on the crease. But only 2 wickets remaining. What can Ram do on his own? While Omar Associates have used the bowlers very smartly. Every bowler has been very economical. This time outside off stump, signal wide by the umpire. Meanwhile, we also have another game going around simultaneously. Total Energy and Fact Date, another decider of the... This time he's hit it hard. Chance for the fielder, but he can only see it sail over his head. 6 runs to Ram Ravi, so he's not given up. He's still fighting. If somehow Ram bats all the way till 20 overs, KGA can still manage anything around 130-40. We'll have at least something for the bowlers to fight. This time another hit and another boundary. We'll have to see the signal of the umpire, and he signaled it a 6. Yes, it's a 6. So back-to-back 6s for Ram Ravi. Haris Ayaz finishes his spell with 2 6s. While on the other hand, Total Energy playing their game against Fact Date on KCCA cricket ground. They're 60 for 3 in 9 overs. So we'll keep an eye on that game as well. It's a knockout kind of a game. Total Energy needs to win. Fact Date needs to win with a big margin. While coming back to the KGA game, so an eventful over the previous one. 15 runs off it. 97 for 8 KGA. Still 5 overs remaining. And Ram is the key. The batsman needs to rotate strike and give strike to Ram. Flighted, loopy delivery and single taken. That's all the batsman Faraz needs to do. Give strike to Ram. The 2 deliveries have been bowled of this over. Ram on strike. This time quicker delivery. He's an old campaigner, Jafar Qureshi, using all his experience. Very hard to hit him. Time another single taken. So 99 now KGA. Somehow they can reach 130 even. They'll have at least something to bowl at. Bowlers will have some chance, but 110-20 not be feasible. This time forward defense, another dot ball. So only 2 runs of this over so far. Ram is calculating who to target. This time single taken. Will they come back for 2? No, they decide against it. So 1 run to end the over. 100 up for KGA club. After 16 overs, they're 100 for 8.
Ram still on crease, batting on 72. most wickets, most valuable player और most fielding disposal उसका print out ठीक है वो आया हुआ है या तो स्क्रीनशॉट लेके भेज देना प्रिंट निकालना This time, loopy delivery to Faraz. He does the right thing. He's given the strike to Ram Ravi, and Ram will definitely be eyeing the boundary from here. He must be eyeing the straight boundary as it's the shortest. He'll be backing himself to hit sixes this time. Flatter delivery outside off some wide. So 4 overs remaining, 102 for 8. Ram still batting on 72. What can he do from here? Shorter delivery outside off stump, and this time no signal by the umpire. He could have cut it through the gap between point and gully. This time he backs himself again and 6 more runs. As if it seems like he's batting on a different planet. If we look at the scorecard and if we look at what Ram is doing, he's batting on 78 while no other batsman in the KGA team has reached double figures. The second highest score in the KGA batting line is the extras, who scored 9 runs. Another short delivery and he's towered it again, and it's 6 more runs. So Ram continues to impress. This is his 6th six. He's batting on 84, 6 sixes, 6-4 and 114 now KGA. They're still fighting, and if Ram stays till the 20th over, you never know, they can even reach 150. But keeping in mind that no other batsmen have reached double figures. This time bowled outside off stump. They're running the first one hard. Will they come back for the second? Yes, they do. Chance, but they've reached safely. So 14 runs. In fact, 16 runs of this over. This time he does the smart thing, rotates the strike on the last delivery. So 17 of that over, eventful over, and 117 KGA club. 3 overs remain. Ram still batting there on 86. 87 with that single. Jafar Qureshi to continue, full toss, and he's clubbed it for 4. The fielder did not even make an effort. Ram into 90s now. And KGA are now 121. It's a reminder they were 83 for 8. And out of 81, 91 runs are scored by Ram Ravi. This time bowled outside off stump and no run. So Ram has his calculation in his mind. He knows who's to target. Still have 16 deliveries. He can make most of these deliveries if he stays on the crease. This time loopy delivery and they've rotated strikes. So single of the third delivery, 5 runs off it.
122 now, KGA club. Still 15 deliveries remaining. And this partnership is a crucial one. The batsman just needs to stay on the crease till the end. This time another loopy delivery, full toss and strike. Rotated, single taken to Ram. They could have run two, but they preferred one. So now Ram will be on strike. Two deliveries remaining. Now another flighted delivery, the rotated strike. So it's clear that Ram will be targeting from the other end. He's giving some respect to Jafar Qureshi, punishing the bad ball and just rotating strike, taking no risk. Still 7 runs off the over. And this time he's hit it. Ram says he'll keep the strike. So no run of the last delivery. 18 overs bowled. 125. दो भागे दो कब भागे एक इसमें कहाँ गया चौका भी लगाए तो चौका लगाए 3 सिंगल बने और फिर डबल बने एक में डबल बने 3 सिंगल आने 3 सिंगल है डबल नहीं और देख लो देखना ना डबल नहीं भागा सिंगल नहीं था वो जाएगा मैंने 24 कर दिया उसको वो पीछे थे दो लेकिन उसने सिंगल ही लिया बराबर काशिफ So Kashif to bowl the 19th over. करेक्ट करना 124 कर देना 124 for 8. 12 deliveries remaining. Ram batting on 93 has already scored 2 centuries previously. Can he take his team to a decent total? They've already done enough. He scored 93 out of 124. That is like 80% of the runs. This time he's hit it towards the cover region. They're coming back for the second, taking up the arm of the fielder and comfortable 2 runs. So smart thing, he'll keep the strike. Now Ram on 95, 1 hit away from his 3rd century of this tournament. This time outside awesome, signal wide. चौका डॉट सिंगल 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 डॉट सिंगल आएगा So 2 of the first delivery followed by a wide. This time fuller delivery and he's hit it straight. They'll definitely be coming back for the second. And easy 2. So he's doing the right thing. He's keeping the strike to himself. Ram moves to 97 now. KGA 129. फिर ये दो थे लेकिन भागा एक ये दो भागे एक Now, the third delivery of this over. So far, 5 runs off the first 2 deliveries.
Ram batting on 97. One hit away from his third century of the tournament. This time he's rotated strike, taken a single to Faraz. Now we have to see what Faraz can do. We've heard that he can hit the ball long. They still have 9 deliveries. If they can get 3 boundaries in these 9 deliveries, they can still reach somewhere close to 150, which will be a brilliant recovery from 83 for 8. So they're fighting hard. Omar Associates have got a very decent batting line. Faraz on strike. Now 4th delivery of the 19th over. Full delivery straight onto the pads. Big appeal. But umpire just walks away. Leg by signaled. The bowler seems disappointed. But importantly, Ram Ravi is now on strike. 131 KGA club. 8 deliveries remaining. Ram batting on 98. Just one hit away from his third century. He's hit it to short third man for another single. 99 for Ram. 132 KGA club. Faraz on strike. I believe he should go for a swing. I think he should try and get a boundary, as even if he loses his wicket, Ram would be on strike for the last over. Eight runs of this over. 7 deliveries remaining. 132 for 8. This partnership has been vital for KGA club. They've put on 49 together so far. And he's clipped it. They're running hard. And they just taken a single. So Ram would be off strike. 50 partnership for the 9th wicket. 133 for 9. So last over, Jafar Qureshi will bowl his final over. He's been very decent with the ball so far. Conceded just 12 runs and picked up a wicket. He'll bowl his last over with Faraz on strike. Flighted delivery, he's hit it straight to long on. So Ram will now be on strike. He's batting on 99 and KGA 134. Can they reach somewhere close to 150? Ram has 5 deliveries. Jafar Qureshi bowling. This time flighted loopy delivery and it's a dot ball. This time another flighted delivery and he's hit it for 1. Will he come back for the second? He decides against it. It's the last over. He should be on strike. He's completed his century, but they've just got
2 runs of the first 3 deliveries. Now it's time Farah should go for the big hit. It's gone for the wild swing and it's a dot ball. So Jafar Qureshi using all his experience, only 2 runs of the 4 deliveries so far. And this time he's middled it and it's gone way outside the boundary. So 6 welcome runs. And KGA have crossed 140, which seemed impossible when they lost their 8th wicket for 83. But this partnership has given some hope to KGA to keep their hopes alive. Last delivery, they've run the first one hard. They'll definitely come back for 2. They decide against it. So 1 run to end the over. 142. So 59 runs partnership for the 9th wicket. KGA have given some hope to their bowlers. They were 83 for 8 and they've managed to score 142 from there. Courtesy brilliant 100 by Ram Ravi, his 3rd for the tournament. 100 of 61 deliveries, 7 fours and 6 sixes. So 143 is the target for Omar Associates to reach the semi-finals. We'll join you shortly for the second innings. While when we look at the other game, Total Energy recovering against Factdate in an important game where they lost their 3 wickets for 34 runs, the top 3 batters. Since then, there's a stand of 62 runs for the 4th wicket. Fahad Jabbar batting on 36 and Mazhar Hussain batting on 30. So 98 for 3 Total Energy in the 15th over. We'll keep an eye on that game and we'll join you shortly after the innings break.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon from the lush green cricket grounds of Karachi Gymkhana. The sun bearing down on the players and on the ground. The two umpires supervising this match are out there in the middle, umpire Riaz Khan and umpire Muhammad Shakil, and we have third umpire Rashid Khan here with us in the commentary position, and match about to get underway. And this is the last round match, the 20th match of the 35th Karachi Gymkhana Ramadan Cricket Festival being played for the Omar Associates trophy, and this match is between the Omar Associates and Karachi Goan Association. KGA won the toss, elected to bat, and they had a disastrous start, but Ram Ravi, he laid out his magic. What a batsman. He has scored 100 not out of 61 deliveries at a strike rate of 163, and with the help of 7 fours and 6 sixes, Ram Ravi is the only batsman, the only player to have scored 3 centuries in 4 matches in a Ramazan cricket tournament, and he's the first player to score 3 centuries in Ramazan cricket in the last 37 years, a historic achievement by Ram Ravi. And play about to get underway, and umpire Riaz Khan supervising from the club road end, while Muhammad Shakil will be supervising from the governor's house end. And signal there by umpire Riaz Khan, play about to get underway. फेस कर रहा है हनीफुर रहमान Anisur Rahman. हनीफ Hanif. दूसरा है गौहर अली Hanifur Rahman facing this time wind off his toes to mid wicket and a single. बॉलर है विक्टर And Victor is bowling from the club road end, and he will be bowling to गौहर अली Gauhar Ali. Gauhar Ali. And forward defensive straight to the fielder at long mid off. No runs, no damage done. Gauhar Ali. Victor to Gauhar Ali. This one a great delivery there by Victor. He had the batsman in tangles, and oh my word, slight bit of mix up here by the fielder, and that the batsman ran across for the second run, and that takes the score on to 3 for no loss. Omar Associates in reply to 143. Swan, good ball, good line, good length, and Gauhar Ali could not do too much about that one. He's hit on the pad, but there was no appeal or anything. He seems to have Victor. Swan's been straying down the leg side, and it's been, let's see, we're waiting for a signal. No, so he got a bat to it, a single to third man, a fine leg. And it's Victor to Hanifur Rahman. This one again straying down the leg side and will pay the price. 4 to fine leg, signaled by umpire. Art run. Take over art run.
Riaz Khan, and that is the end of the first over. And at the end of first over, Omar Associates are 8 for no loss. 8 for no loss. And the feature of today's match, again, I have to repeat, Ram Ravi's great century. The rest of the team crumbled in front of the Omar Associates onslaught. Ram Ravi was the only one who took care of the bowlers. He knew what he was doing. He scored a great century with the help of 6 sixes and 7 fours. Great job done by him. And you can. And Faraz from the Governors has hand, good ball, good line, good length. And Gauhar Ali, forward defensive, no runs. It's going to be Faraz back, top of his bowling mark. Here he comes, turns around to bowl to Swanik, pitched outside the off stump, moving away, and Gauhar Ali doesn't want to have anything to do with that, and the keeper collects. Gauhar Ali and helmet ball. Good bowling by Faraz. Faraz to Gauhar Ali wearing a helmet. Here he comes. This one pitched on the middle stump, and he's turned it round the corner to backward square leg for a single, comfortable single. That takes the score on to 9. 9 for no loss. Omar Associates, and it's going to be Faraz to bowl to Hanifur Rahman, wearing a cap, blue cap, and here comes Faraz. Here comes Faraz, to Hanifur Rahman. This one wide outside the leg stump, signaled by umpire Muhammad Shakil, and that takes the score on to 10. 10 for no losses, and this is the second over, second of the 6 overs with fielding restrictions, and it's going to be Faraz to bowl to Hanifur Rahman, and driven by Faraz, but straight to the fielder at mid-off, no runs, no damage done. And today's winner of today's match will go to the semi-final, one of the 2 semi-finals which will be held tomorrow, Wednesday and Thursday. We have semi-finals tomorrow and day after, and Friday the final. This one outside the off stump, mistimed it, straight to the fielder at cover, no runs. Faraz bowling a good line, good length, keeping Hanifur Rahman quiet. And here comes Faraz. This one's been guided to point, no runs. And that is the end of the second over. And at the end of 2 overs, score is 10 for no loss, Omar Associates. Good over by Faraz, he gave 2 runs in it. And one of the other features of the KGA innings, besides the 3rd century scored by Ram Ravi, was the fact that none of the batsmen could come into double figures. None of them. So you can see the great innings. Oh, he's bowled him. Center stump. Great delivery by Victor. Victory? Yes. Great delivery by Victor. Clean bowled.
Gauhar Ali wanted to dispatch this ball out of the ground, failed to make contact, crossed batted shot, and center stump got. So this is the first wicket, and Omar Associates are 10 for the loss of 1 wicket, and that of Gauhar Ali. And let's see who's walking in. It's Adnan Kaleem. With wickets falling all around him, we have to give credit for the great innings played by Ram Ravi. He scored a century, 100 not out, when his team was what? They had lost wickets right from the word go. Nobody, no batsman got into double figures. And it's going to be now Victor to Adnan Kaleem. The team winning this match goes to the semi-finals. Here comes Victor. This one, oh my word, if that had hit, it would have been close. There was the fielder at mid-on had a go at the stumps at the non-striker's end, but failed to make contact. But it would have been touch and go had that hit the stumps. KGA fielders all geared up and all eager to go. They want to win this match. Here comes Victor. This was a bad delivery by Victor, overpitched outside the off stump, and it got the treatment which it deserves. Full toss, and Adnan Kaleem drove it to long of 4 runs. That takes his score on to 14. 14 for the loss of 1 wicket. Bad delivery there. And Victor to Adnan Kaleem. This time, yes, he's out. Umpire Riaz Khan responding to the appeal by the bowler and the wicketkeeper declared him LBW. So Adnan Kaleem is gone. And Omar Associates are 14 for the loss of 2 wickets. 14 for the loss of 2 wickets. Victor taking another wicket. He took a wicket in his last over, and now he's taken another wicket. He's doing a great job for the KGA team. क्या है ये? ऐसे ही दे रहे हाँ? ऐसे आउट था? नहीं आउट। नहीं, हम वैसे ही देख रहे हैं। नहीं, मैं भी वैसे ही पूछ रहा हूँ। अभी देखा ही नहीं है। ओए, अच्छा देखो, दिखाओ यार रामनी जी। इधर से तो हम नहीं बता सकते हैं, इस एंगल से तो इम्पॉसिबल। ये वाला? 134। वो कोई अपने ग्लव दिखा रहा था। इधर से भी नहीं आप बता सकते, सामने से बताएं। था तो सामने, मगर आई डोंट नो। ओके, बैट्समैन। नहीं, वो मैच चल रहा है ना, मैं कर नहीं सकता। दूसरा मैं कर नहीं सकता के लिए। मैं कर नहीं सकता। साइड में आ रही आउट था, ऐसे नहीं आप बता सकते यार, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कौन बैट्समैन? इमरान जावेद। अच्छा, फर्स्ट क्लास प्लेयर, डिपार्टमेंट नेशनल बैंक। The next batsman is Imran Javed, and he's a first-class cricketer, plays for National Bank. And Victor, to continue, he's going to bowl to. He bowled the first ball, and Imran Javed, careful.
Here comes Victor to Imran Javed. Again, he's guided it past the square like umpire for a single, and that is the end of the third over. And at the end of the third over, Omar Associates have 16, 15, 16 for the loss of 2 wickets, 16 for the loss of 2 wickets. And let's see who comes in from the club road end. Faraz to continue. Faraz has bowled 1 over, and this is his second over. Victor has bowled 2 overs and taken 2 wickets, and he will be bowling, and Hanifur Rahman will be facing him, and this is the 4th over to be bowled. Here he comes, Faraz. Wow, he's gone. Great delivery there by Faraz. Caught behind. What a sensational start to the innings. A great start to this innings. This is an exciting match now. This is the 3rd wicket, and this is a wicket of Hanifur Rahman. No, sorry, Imran Javed. Imran Javed, the main man. The ball, great delivery by Faraz. It was pitched on or about the leg stump and moving away and taking that edge, the right channel to bowl on this wicket. And that is, and now 16 for the loss of 3 wickets. Omar Associates, 16 for 3. There's and a great job done by KGA. They're full of enthusiasm, and with this 3rd wicket, you can see a spring in their stride out there in the middle. They're ready to go. They want to win this match. It's a low-scoring match. I've gone out of the way. Azhar Khan, member of Karachi. And in walks Azhar Khan with a golden helmet, and maybe it signifies something which I don't know. And Azhar Khan is a member of Karachi GYMKHANA, and he's playing for Omar Associates. Azhar Khan out there in the middle, walking towards the wicket keeper end, where he will be facing Faraz. Faraz has just taken a wicket, and it was a beautiful delivery. Swung from outside the off stump, got the edge, and straight to the keeper, and the very valuable wicket of Imran Javed. And it's going to be Faraz to Azhar Khan. Azhar's got a slip in place now. Yes, you have to be aggressive. Here comes Faraz to Azhar. Whoa, my word, that was a great delivery. Another coat of varnish, and it could have been another story. Faraz bowling very well. Excellent bowling by him. And it's going to be Faraz to Azhar Khan. Azhar must know this wicket and this ground very well, because he always plays here as a Karachi GYMKHANA member, and this one, the better, more confident shot, and it's in cut to point, no run, straight to the fielder. Score says at 16, and Faraz to Azhar Khan. Faraz to Azhar Khan. This one, he's lofted it over towards point position, and he gets 2 runs over the inner circle. Safe shot there by Azhar Khan. That takes the score on to 18.
18 for the loss of 3 wickets. Omar Associates in reply to 142 made by KGA, out of which 100 was scored by Ram Ravi. Here comes Faraz. To Azhar Khan. One slip in place. Here he comes. And this one is bounced. And Azhar Khan wants to have nothing to do with this one. Straight to the wicketkeeper. No runs. No damage done. Score stays at 18. 18 for the last of 3 wickets. And it's Faraz. Victor has got 2 wickets and Faraz has got 1. Victor had 1 wicket in each of his 2 overs, and Faraz has got 1 wicket in his 2nd over. And this one, a great shot by Azhar Khan. He went down the wicket, got to the pitch of the ball and lofted it over the inner circle to long on. 4 runs, and that takes the score on to 22. 22 for the last of 3 wickets, and this is the 4th over which has been completed. And let's see who comes into bowl from the Club Road end. Yeah. It's Victor to continue from the Club Road end, and he will be bowling to Hanif Rahman. Things have been quiet for Hanif. The action has been taking place at the other end. Here comes for Victor to Hanif for Rahman. Good. Ji? Adnan Salim? Adnan Kaleem. Batsman. Adnan Kaleem? जी जी बैट्समैन जिसने सिंगल अजहर खान जो है वो गोल्डन कैप वाला हाँ वो तो है ना तो वो तो अजहर खान है ना ये अदनान कलीम है अदनान कलीम ने शॉट खेला This time straight to great fielding there. And Victor, good delivery there by Victor. Victor is going to be bowling to Azhar Khan. The fine leg fielder is being brought into this inner circle from the boundary. Here comes Victor. And it's been turned round the corner to square leg, and good running between the wickets, 2 runs, and that takes the score on to 24. 25 for the loss of 3 wickets, and it's Victor who's bowling from the Club Road end, and he'll be bowling to Azhar Khan, who normally plays here. He's a member of Karachi GYMKHANA. Here comes Victor, and this time outside the off stump, Azhar Khan trying to make contact, failed to do so, and umpire Riaz did not signal anything, so here we go again. Collected by the keeper, and here comes Victor. And this time it's been driven to cover, straight to the fielder, no runs. Good bowling by Victor, and keeping things tight here. And this is the 4th over being bowled. The 4th. This one been driven to mid-wicket, and great fielding there by the fielder. And oh yes, he saved at least 1 run, if not 3. And that is the end of the 4th. 26, 25. 26 for the loss of 3 wickets at the end of 4 overs. 5 overs. At the end of 5 overs, it's 26 runs. उसने 3 लगाए. मैं क्या कर रहा है? उर्दू में बोलेंगे.
26 रन 5 ओवर 26 रन 5 ओवर And a single, and Faraz, you just go on, you're all right. Faraz continuing from the governor's house end, and this will be his third over. And this is the last over of the fielding restriction, 6 overs, and Faraz will be bowling to Adnan Kaleem. Takes guard, and here comes Faraz. To Adnan Kaleem. A good delivery and good fielding there at Gully, and batsman amble across for a single. That takes the score on to 27. 28 28 gets it. दो सिंगल हो Achha, do single. Yeah, okay. 28 for the loss of 3 wickets, and Faraz will be bowling to Azhar Khan in the golden helmet. Here he comes. A good delivery by Faraz, and Azhar guides it to Gully. No runs, no damage done. Score continues at 28 for the loss of 3 wickets. Faraz bowling a good line, good length, and this is the last over of the fielding restrictions. So we have one fine leg is on the boundary, and besides everybody is inside. Here he comes. And he guides it to Gully. No runs, no chance of a run for us. Bowling a tight line and length, and batsman Azhar Khan being very careful, which is the right thing to do at this stage of the game. Here comes Faraz to Azhar Khan. Word again, a great delivery by Faraz, and pitched about outside the off stump and moving away, and Azhar Khan wanted to drive it through to covers, failed to make contact, collected by the keeper, no runs, and the score continues at 28 for the loss of 3 wickets, and it's Faraz to Azhar Khan. Packed offside field. Here comes Faraz. And this time he was able to guide it past the Gully fielder, and third man fielder collected a single to Faraz and to Azhar Khan, and that takes the score on to 29. 29 And at the end of 6 overs, 29 runs for the loss of 3 wickets. 29 रन Omar Associates, and now the fielding restrictions are off, and let's see, this will be interesting, what happens now. And Victor will be bowling his 4th and last over from the club road end, unless there's a change there now. Victor, yes, it's going to be Victor who's going to complete his 4 overs, it seems. And he will be bowling to Azhar Khan, who got a single of the last delivery. As such, he's facing. Now we have a cover on the fence. We have a long on the fence, a square leg on the fence. And here comes Victor. Azhar Khan, straight past the bowler, straight drive back to the bowler, and it goes to long on, and Azhar Khan gets a single, and that takes the score on to 30. 30 for the last of 3, and it's going to be Victor, and he will bowl to Adnan Kaleem. Victor to Adnan Kaleem. Here he comes. Oh my word, that should have been caught.
hesitation on part of the fielder at mid on, and the batsman cross over for a single, and that takes score on to 31. 31 for the last of 3 wickets, and it's going to be Victor. He's bowling his last over, and he'll be bowling to Azhar Khan. Here comes Victor. An almighty lofted shot to long on. Batsman he gets a single. Batsman cross over, 32. 32 for the last of 3 wickets, and it's umpire Riaz Khan supervising the proceedings from the club road in, while umpire Muhammad Shakil doing the same from the governor's house. And here comes Victor to Kaleem, and this one signaled by umpire Riaz Khan as a wide. This was outside the off stump. Good job by the keeper to collect it. And the score goes on to 33. 33 for the loss of 3 wickets. Victor to Adnan Kaleem. Here he comes. And this time straying down the leg side, and the fielder in at fine leg comes in, and the batsman cross over for the second, and that takes the score on to 35. It was a bad delivery, straying down the leg side. And it's going to be Victor to Adnan Kaleem. Hot, muggy day. I'm sure they all are thirsty out there in the middle. Victor, this time again straying down on the leg side, but is able to save it. Only a single to Kaleem, and that takes the score on to 36. 36, and Victor going back to his top of his. Okay, now the mid-wicket fielder is going to the fence. Now we have mid-wicket on the fence, backward square leg on the fence, and long on the fence. Here he comes, Victor. And a great shot there by Azhar, and fielder stops the ball, and the batsmen are able to get 2 runs, and that takes the score on to 38. 16.1 पे चेज करना 135 40. 38 at the end of 7 overs, and this is becoming an intense match. Low scoring matches normally I've seen become intense as something happens, something or the other happens, and the chasing side always loses wickets, and sometimes they lose the match as well in spite of the low score. And some cooling equipment. I think the wicket keeper is the batsman is Adnan has got a helmet now. As let us see who's going to be bowling from the. It's going to be Mario who replaces Faraz. Mario, off-break bowler. Oh, okay. ठीक आप सही कह रहे हैं. Mario will be bowling to Adnan Kaleem, who's wearing a cap, while the keeper has got a helmet because he's right on top of the stumps. Mario, off-break bowler, he'll be bowling from the governor's house, and then he comes into bowl to Adnan Kaleem. And forward defensive, gentle hands, gets him 2 runs. 2 covers, and that takes the score on to 40.
40, and this is the 7th over being bowled. Fielders being switched. I guess Mario thought that fielder at that position was not fast enough, so we have the switch, and here comes Mario to Adnan. Oh. Throw at the stumps, didn't connect, but there was Adnan Kaleem was safe home even if he had connected, and it's going to be Mario to Azhar Khan. And this one's been swept to square leg and a misfielding there. Umpire Muhammad Shakil signals for this kind of misfielding, and Mario is not very happy about that. 4 runs, and that takes the score on to 44. With such a low total, you cannot afford to misfield or drop catches. Here comes Mario. This one's been driven straight. Great fielding there by the fielder at long on, and the batsmen only were able to take 1 run, and that takes the score on to 45. 46. And it's going to be Mario to Adnan Kaleem. As there's nobody there close in, there are singles on both sides of the wicket, and that is what Adnan Kaleem did, and it's going to be 47. This is the 8th over being bowled. Here comes Mario, and he's bowling it to another single. Intelligent batting by both of them out there in the center, and that is that takes the score on to 48. 48. This 8th over has been bowled, and with that, I thank you very much. I will hand over the commentary to Mirza Qamar Beg, who will continue in Urdu, and see you tomorrow, inshallah, for the first semi-final. Let's see which team wins. We have an exciting match on our hands here today. And Mirza Qamar Beg. Thank you, sir. Thank you, sir. शुक्रिया जनाब मियाँ शौकत हुसैन साहब अपनी अंग्रेज़ी की दिलफ्रेब कमेंट्री से हमें महसूस कर रहे थे। और जब मियाँ शौकत साहब यहाँ अंग्रेज़ी कमेंट्री करते हैं तो बिल्कुल उमर कुरैशी वाला दौर याद आ जाता है, क्योंकि हीज़ कमेंट्री सिमिलर टू उमर कुरैशी। बहुत ही डिलीशियस कमेंट्री का स्टाइल है मियाँ शौकत हुसैन का। जब तक वो कमेंट्री कर रहे होते हैं तो उनके होठों से फूल जल रहे होते हैं। इस बीच अंग्रेज़ी की कमेंट्री और क्रिकेट कमेंट्री में है, जिसे कहना चाहिए ना, जो लुत्फ़ है वो अंग्रेज़ी कमेंट्री का ही है। और कमेंटेटर जो अंग्रेज़ी के मियाँ शौकत हुसैन साहब जैसे हों तो और क्रिकेट का मज़ा दोबाला हो जाता है। और यहाँ उमर इंटरप्राइजेस उमर एसोसिएट है जो पीछा कर रहे हैं 143 रन का। पैंतीसवां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल का ये राउंड का आखिरी मैच है जिसे कहना चाहिए, और ये क्वार्टर फाइनल स्टेज है इस मैच की। कहना पड़ेगा जो टीम जीतेगी वो
सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इस बीच ये एक 4 रन हासिल किए हैं। अजहर खान ने जो ही मिड स्टम्प पे गेंद को देखा, अगले कदम पे आए, खेला उसे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर अपडेटिंग 54 रन उमर एसोसिएट 143 रन का पीछा करते हुए यहाँ चौवन रन 9वें ओवर के अख्ताम पर 54 रन। और मौजूदा रन औसत जो चल रहा है वो 6.00 है। अब रिक्वायर औसत जो है वो 8.09 हो चुका है। और 3 विकेट खो चुके हैं यहाँ उमर एसोसिएट के बल्लेबाज 143 रन का पीछा करते हुए। अजहर खान खेल रहे हैं 26 रन पर 26 गेंदों का सामना किया। अजहर खान ने 3 चौकों की मदद से। अदनान कलीम खेल रहे हैं 12 रन पर 10 गेंदों का सामना करते हुए। उस बीच अदनान कलीम ने एक 4 रन के लिए स्ट्रोक खेला है यहाँ डीप लॉन्ग ऑन की तरफ। अदनान कलीम पहुंचे 16 रन पर 11 गेंदों का सामना करते हुए। एक चौके की मदद से अदनान कलीम और अजहर खान के बीच जो साझेदारी हो गई है, चौथे विकेट की हो गई है। 44 रन की साझेदारी, अच्छी साझेदारी कहेंगे। और अपने बल्लेबाजों को एक मुश्किलात से निकाला है इस साझेदारी ने। अदनान कलीम और अजहर खान अच्छी बारी ले रहे हैं, दोनों समझबूझ के साथ खेल रहे हैं और अपने बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा मकाम खड़ा कर रहे हैं। और इस बार अच्छी गेंद टर्न किया है ऑन साइड पे खूबसूरती के साथ। अदनान कलीम ने 1 रन के लिए। अदनान कलीम पहुंचे 19 रन पर 13 गेंदों का सामना करते हुए। अब अजहर खान सामना करेंगे मारियो का। शुरुआत में जो तेज़ गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, किफ़ायती गेंदबाजी की थी, और ये बहुत ही बदकिस्मत रहे मारियो। कॉटन बोर्ड का चांस था, आखिरी लम्हे में गेंद को होल्ड नहीं कर पाए और एक ज़िंदगी दे बैठे अजहर खान को। अदनान कलीम था, अजहर खान था, नहीं अजहर खान रन बन गया था। मारियो फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंद करेंगे अदनान को। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है अदनान ने। डाउन द विकेट आए हैं, फ्लाइटेड गेंद को लिया बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन के लिए खेले। मारियो फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और इस बार स्वीप किया है। मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को देखना पड़ेगा तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से जाके फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ 10वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 10वें ओवर के इख्तिताम पर 64 रन। मौजूदा रन औसत जो चल रहा है वो 6.40 और रिक्वायर औसत जो है वो 7.90। लेकिन जब तक 7-8 का औसत दरकार रहेगा तो मैच
खासी हद तक पड़ने में रहेगा उमर एसोसिएट के। अगर केजीए के गेंदबाजों को मैच में आना है तो किफ़ायती गेंदबाजी करना पड़ेगी और रन औसत को बढ़ाना होगा, रिक्वायर रन औसत को। अगर रन औसत 10 के करीब पहुंच जाएगा तो खासी दिक्कत होगी चेस करने में। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जो चौथे विकेट की साझेदारी में मसरूफ़ हैं, 48 रन बना चुके हैं अब तक 41 गेंदों का सामना करते हुए। और पूरी उम्मीद है, पूरी आस है इन दोनों बल्लेबाजों पर जिस तरीके से बारी ले रहे हैं। और इस बीच फ्लाइटेड गेंद थी, उसको खेला है डीप कवर की तरफ 1 रन के लिए। और उम्र के हैं 10 में 74 3 हाँ तो सही आपको पता है। अगली गेंद और इस बार रिवर्स अंदाज में खेले हैं, कामयाब हुए हैं। देखना पड़ेगा थर्ड मैन की फील्डर जाके तब तक फील्ड करें। 1 रन पूरा किया तब तक की फील्ड करके थ्रो करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। ये किसने लगवाया स्कोर भरना? इसको चेक करो कितना हुआ? पिछले ओवर में क्या था? नहीं, वहाँ देखो क्या लगा हुआ है। 64 74 नहीं है 64। तो मरवाओगे यार उसका। मैंने उसको 64 ही बोला। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद खेलते ही तेजी के साथ 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। जी सर। रन औसत जो रिक्वायर है वो इस वक्त 7.90 है। डोमिनिक बाइने हाथ से और ये उछाल दे बैठे हैं और ये आउट। एक बड़ा झटका, बड़ा सदमा कहना पड़ेगा। अजहर खान आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। अच्छी फ्लाइटेड गेंद थी, खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से उछाल दे बैठे कवर की जानिब, जहां फील्डर ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ बहुत ही क्वार्टर फाइनल में और 10 में 64 में 4 आउटों को मर गए। हाँ जी जाफर कुरैशी वाले। और ये बड़ा झटका है उमर एसोसिएट के लिए। इकबाल शीट का मैच है। यार अपडेट नहीं हुआ इसको। वो करेगा तो आएगा ना। आएगा। हाँ यार परेशानी कोई बात नहीं। कैसे रुक जाती है ना। हाँ हाँ मुझे पता है। जी अल्लाह का शुक्र। तारीफ करना पड़ेगी यहाँ केजीए क्लब के गेंदबाजों की और फील्डरों की, जिस तरीके से काबू कर रहे हैं उमर एसोसिएट के बल्लेबाजों को। डोमिनिक थे ये गेंदबाज जिन्होंने अभी अभी ये विकेट ली है और खासी हद तक परेशान किया है यहाँ उमर एसोसिएट को, जो कि 11वें ओवर का खेल हो रहा है और 68 रन स्कोर पर सजे हुए हैं और रन औसत हल्का सा बढ़ता हुआ 8.04 जो दरकार है। डोमिनिक बाइने हाथ राउंड द विकेट। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, अच्छी गेंद, उसको इज्जत के साथ खेले हैं वापस बॉलर की जानिब, जहां बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। वेल बॉल्ड डोमिनिक गेंद करेंगे इकबाल शेख को और इस बार लेग ब्रेक गेंद थी, बैक फुट पर गए इकबाल शेख, धीरे से खेला है स्पिन के साथ ही मिड ऑफ की जानिब, जहां फील्डर झपटते हुए आए गेंद पर। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए और इसी के साथ 11वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 68 रन 68
loss of 4 wickets, chasing the target 143. 68. उमर एसोसिएट अब 75 रन दरकार हैं, 56 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। जो औसत दरकार है वो 8.18 है। खासी हद तक मैच हम कहेंगे इवनली बैलेंस है। अब तक दोनों टीमों का पड़ला एक जैसा है। यहाँ विकेट चटखानी पड़ेगी केजीए के गेंदबाजों को और साझेदारी सजाना पड़ेगी उमर एसोसिएट के बल्लेबाजों को अगर मैच में कामयाबी हासिल करनी है और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर। जिस तरीके से ये बड़ा मैच है, ये क्वार्टर फाइनल है, जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुँचेगा और दोनों ही टीमें जान मारेंगे क्योंकि मैच जिस स्टेज पर आ गया है खासा दिलचस्प है। 75 रन चाहिए और 54 गेंदों पर और 6 विकेटें अभी हाथ में हैं उमर एसोसिएट की। और वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है। इमरान आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने कमेंट्री बॉक्स की ओर से। इमरान के लिए फील्डिंग की सजावट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इमरान दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई इस गेंद को स्पिन का इंतज़ार किया, टर्न किया उसे ऑन साइड पे, तब तक कि डीप मिड ऑन से फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। इमरान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे इकबाल शेख को और इस बार पुल के अंदाज में खेलें। इकबाल लॉन्ग ऑन की जानिब, तब तक कि फील्डर फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। इकबाल शेख पहुँचे 1 रन पर। अदनान कलीम खेल रहे हैं 24 रन पर। 17 गेंदों का सामना किया है, 1 चौके की मदद से। अदनान समझते हैं इस मैच की अहमियत को और इस बार उछाल दिया है, देखना पड़ेगा और ये आउट। बहुत बड़ी विकेट यहाँ हासिल की है। केजीए के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बैकफुट पर किया है उमर एसोसिएट को। 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, चूक गए पूरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए एक तरीके से उनका बल्ला फंस गया था और उछाल दे बैठे थे जहां कवर के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लेकर बारी का खात्मा किया। एक बार आउट होने वाले बल्लेबाज अदनान कलीम जो कि 24 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना किया, 1 चौके की मदद से। 133 का स्ट्राइक रेट था अदनान कलीम का और पूरी आस थे, पूरी उम्मीद थे अपने बल्लेबाजों के लिए, लेकिन अपने बल्लेबाजों को बीच मंझधार में छोड़ते हुए आ रहे हैं कलीम। तारीफ करना पड़ेगी केजीए के गेंदबाजों की भी, जिस तरीके से कमबैक किया है। यहाँ 73 रन दरकार हैं, 51 गेंदों का सामना करना है और अब जो रन औसत है बढ़ता हुआ 8.95 और इस बार लेग ब्रेक गेंद थी, कट करना चाहते थे। मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद गई विकेट कीपर के पास, पूरी तरीके से चूके बल्लेबाज। इमरान फिर से तैयार, इस बार फिर से लेग ब्रेक गेंद थी, गेंद में उछाल दे दिया है, उठता हुआ शॉट है लेकिन गैप में है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अच्छा, बड़ा दिल वाला शॉट कहना पड़ेगा नए जाने वाले बल्लेबाज जाफ़र कुरैशी का। इकबाल शेख थे ये बल्लेबाज, शुक्रिया राशिद। इकबाल शेख और जाफ़र कुरैशी की साझेदारी देखना पड़ेगी, किस तरीके से अपने बल्लेबाजों को इस मुश्किलात से निकालते हैं। इसी के साथ अब 12वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 74 रन और अच्छा किफ़ायती ओवर था। 1 विकेट लेके 6 रन दिए हैं इस ओवर में इमरान जो कि दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार इकबाल शेख ने उनकी एक लेग ब्रेक गेंद पे
खूबसूरत शॉट खेला था, बिल्कुल गैप में 4 रनों के लिए। और वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियाँ फिर से डोमिनिक के हाथ में। डोमिनिक बाइने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, अब तक 2 ओवर कर चुके हैं, 10 रन देके एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा है। इकनॉमी उनकी 5.00 है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं डोमिनिक। और गेंद करेंगे अब बाइने हाथ के बल्लेबाज जाफ़र कुरैशी को, और इस बार गेंद अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती है, उस गेंद को पूरे ध्यान के साथ खेले हैं। वापस बॉलर की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। डोमिनिक फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे जाफ़र कुरैशी को। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, अगले कदम पे खेले हैं जाफ़र डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब। वहाँ मिस फील्ड ज़रूर हुई है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि बहुत आराम से रन दौड़ रहे थे दोनों बल्लेबाज। वहाँ मौका दिया था फील्डर ने दूसरे रन का, लेकिन हिम्मत ना दिखा पाए दोनों बल्लेबाज। डोमिनिक फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे इकबाल कुरैशी को। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। डोमिनिक की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, अगले कदम पे खेले हैं। 2 टप्पा खाने के बाद गेंद फील्डर के हाथ में गई, फील्ड किया फील्डर ने। जब तक फील्ड करके थ्रो करते मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और 1 रन के साथ 76 रन 76। और अब 67 रन चाहिए 45 गेंदों पर 8.93 के औसत से। और इस बार इकबाल कुरैशी ने खेला है, देखना जाफ़र कुरैशी ने खेला है ऑन साइड पे, अगले कदम पर डीप मिड विकेट की जानिब 1 रन के लिए। ये दोनों बल्लेबाज तब तक क्रीज पर मौजूद हैं, एक उम्मीद है और एक आस है उमर एसोसिएट के लिए। जाफ़र कुरैशी भी खासी नाम रखते हैं, काफ़ी सीनियर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं जाफ़र कुरैशी। उनका खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है विकेट क्रीज पर। डोमिनिक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.5 ओवर कर चुके हैं, सिर्फ 13 रन दिए। इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं डोमिनिक ने। और इस बार फिर से अच्छे गेंद ऑन साइड पे शफल करते हुए खेला है, डीप मिड ऑन की तरफ फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ डोमिनिक का एक और अच्छा और किफ़ायती ओवर ख़त्म हुआ। डोमिनिक ने सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में। 13वें ओवर के अख्ताम पर 78 रन 78। और अब मौजूदा रन औसत बढ़ता हुआ 9.29। और अब वो मकाम आ गया है मैच में कि अब 2 बाउंड्रीज ज़रूर लगाना पड़ेंगी अगर रन औसत को काबू में रखना है। तो ये वो स्टेज होती है कि जब आपको 2 बाउंड्रीज लगानी हो, तो इस बाउंड्रीज के जिद्दोजहद में आप अपनी विकेट भी खो सकते हैं। तो ये मैच बड़ा दिलचस्प मरहले में बॉलर कौन है, चेंज हुआ है, मारियो है उसकी जगह इमरान की जगह। अच्छी गेंद की थी इमरान ने। और यहाँ मारियो आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। दाऊद कौन है, गेंदबाज का नाम हमें पता नहीं। और ये आउट, पहले ही गेंद पे पवेलियन की राह दिखाई है, मारियो थे ये गेंदबाज। और यहाँ हम ये सोच रहे थे कि इमरान जिन्होंने पिछला ओवर अच्छा किया था, दाहिने हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाजी की थी, उनको क्यों चेंज किया गया है। लेकिन यहाँ कप्तान ने साबित किया कि उनका ये जो फैसला था बहुत ही कामयाब फैसला था, मारियो को लाए हैं। हालांकि इमरान पिछला ओवर बहुत ही किफ़ायती और अच्छा करके गए थे, विकेट के साथ करके गए थे, लेकिन यहाँ कप्तान ने मारियो को लेके आए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। मारियो ने आते ही विकेट चटकाई है, इकबाल शेख को पवेलियन की राह दिखाई है। यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी कप्तानी की भी, जिस तरीके से गेंदबाजी में तब्दीली की है और पूरी तरीके से बैकफुट पर कर दिया है उमर एसोसिएट के बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छी
मारियो की गेंद को लंबी हिट लगाना चाहते थे। इकबाल शेख गेंद से पूरी तरीके से चूके, जहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ एक बड़ा सदमा और एक बड़ा झटका कहना पड़ेगा उमर एसोसिएट के बल्लेबाजों के लिए, जबकि उनके एक और बल्लेबाज इकबाल शेख आउट होकर पवेलियन में आ चुके हैं। नए जाने वाले बल्लेबाज इमरान माना, बड़ी शदीद ज़रूरत थी यहाँ साझेदारी की उमर एसोसिएट के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी वहाँ कप्तान की गेंदबाजी की, समझदारी की, जिस तरीके से तब्दील किया, मारियो को लेके आए। मारियो की अगली गेंद धीरे से खेले हैं ऑन साइड पे, तब तक के डीप मिड विकेट से फील्डर आके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और जो ही फील्डर को गेंद पे झपटते देखा दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन का इरादा तर्क किया और 1 ही रन पर अपने आप को रोके रखा। मारियो अब राउंड द विकेट गेन करेंगे जाफ़र कुरैशी जो कि बाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके लिए फील्डिंग की सजावट। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, ऑन साइड पे 5 ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे मिड ऑफ लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, लॉन्ग ऑफ भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, एक गली, पॉइंट और कवर, ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, और डीप मिड ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप लॉन्ग ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बार मारियो की गेंद, अच्छी गेंद, बैकफुट पर रखा जाफ़र कुरैशी ने खेला उसे ऑफ साइड पे ध्यान के साथ 1 रन के लिए। मारियो फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। इमरान माना को ओवर द विकेट इस बार गेंद कर रहे हैं, और ये गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी। इस गेंद को फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से डॉट गेंद, और अब रन औसत बढ़ता हुआ 9.95, जो कि खतरात की अलामत है। 2 बाउंड्रीज ज़रूर चाहिए होंगी हर ओवर में अगर इस रन रेट को। इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ कहना पड़ेगा गेंदबाज के साथ। फील्डर भी पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, अपने गेंदबाजों का जान मार रहे हैं, क्योंकि उनको इस मैच की अहमियत का पता है। मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, बहुत ही मुशक्क़तें उठा रहे हैं फील्डर भी गेंदबाज के साथ साथ। और इस बार खेला है डीप मिड ऑफ की जानिब 1 रन के लिए, और अच्छा ओवर हुआ मारियो का ख़त्म। मारियो ने सिर्फ 3 रन दिए हैं इस ओवर में, अच्छा किफ़ायती ओवर, 1 विकेट भी चटकाई है मारियो ने। 3 ओवर 23 रन मारियो, 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। और मैं इसी के साथ आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर जनाब उमर खान के हवाले माइक करता हूँ अंग्रेज़ी के लिए। नाउ ओवर टू उमर खान। बड़ा मजा नहीं सर, बहुत जरा नवाजी है आपकी सर। नहीं मजाक नहीं, इतनी मजेदार कमेंट्री करते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं मजाक, लेकिन जो आपकी भी डिलीशियस है, उड़ जाती है कमेंट्री आपकी। सबकी अपनी है। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg. We're into the last 6 overs of the last game of the league stage. And what a game, equally poised, although KGA has the upper hand, but at the same stage after 14 overs, KGA were 83 for 8. And the only difference was Ram Ravi, who scored a century. This time hit 2 covers and 1 run added. So the big question is, can Jafar Qureshi play a Ram Ravi here for Omar Associates? They're chasing 143, 82 for 6. We're into the 15th over. Not much batting left. Jafar Qureshi is the only hope. Ayaz Paul is now bowling. For KGA this time, loopy flighted delivery hit towards the long off region. They've run the first one hard and settles down on 1.
60 runs required of 34 deliveries. The required rate is at tens now. 60 जी This time he's pulled up in the air. Chance for the bowler and he catches it. So 7th wicket down and KGA Club out of nowhere are dominating this game. 7 down for Omar Associates. They had a very modest total of 143 to chase and they've made a mess out of it. 83 for 7. Same stage. KGA were 83 for 8. And Ram Ravi took KGA to 142 courtesy of his brilliant century, his 3rd century of the tournament. He scored 383 runs in 4 innings he played. But now Omar Associates in dire straits with 83 for 7, still 60 more runs to get of 33 deliveries. Jafar Qureshi still batting, but it is a bit too much to ask. But it's cricket, we've seen funny things happen. But credit goes to KGA Club for fighting back. Brilliant performance so far. Another flighted delivery, this time hit straight to covers, dot ball. So now every dot ball will just mount up the pressure. Single to follow, and now Haris Ayaz. We've seen that he can hit the ball as well. Strike rotated now. Jafar Qureshi back on strike. 85 for 7. End of 15 overs. 58 runs more to get of 5 overs. Last 5 overs of the innings. And we have to see how things goes. As Omar Associates require boundary in every over from here. They're already 7 down. The pressure is back on Omar Associates. What looked and seemed like an easy run chase has become a mountain now for Omar Associates. Meanwhile, on the other match being played at KCCA Cricket Ground, fact date 54 for 2 in 6 overs. They need to chase the target in 16.1 overs or earlier to reach the semi-finals. They're 54 for 2 in 6 overs, chasing 136 this time. Watch out! And boundary to follow. The walkers need to be careful, especially in the death overs when the batsmen are aiming to hit. 4 runs to start the over, just what Omar Associates need. They need 11 runs an over. Mario is bowling. The 16th over of the innings, 90 runs now. Omar Associates, Jafar Qureshi on strike. Mario bowling his last over for the day. He's conceded 27 runs so far. Jafar Qureshi now on strike. He's more than capable to chase this down. This time fuller delivery is hit it towards the long leg fielder. Into the sun. The fielder could have taken few steps and attempted a catch,
He preferred to play it safe. He just stayed back and saved the boundary. So 1 run added to the total now. Haris Ayaz on strike, 91 for 7, Omar Associates. 3 deliveries remaining. This time hit towards the long on region for 1. So score ticking now, 92 for 7. 51 runs required, 26 deliveries. This time he's hit it towards the fine leg region. 4 more runs, second boundary of the over. Just what Omar Associates needs. So this game is not over yet. Both teams are fighting. 96 now, Omar Associates. They need 47 more runs. 25 deliveries. So they need to score around 11.5 runs and over from here. Jafar Qureshi holds the key. Last delivery of the 16th over. This time ball outside off stump. He's chased it. 1 bounce to the long leg fielder. 1 more run added to the total. 46 runs of the last 4 overs. 3 wickets remaining. Jafar Qureshi batting with Haris Ayaz. 97. वो बताते हैं देखो ये बताएगा नंबर 1 4 से 2 3 4 तो 1 4 कैसे डिसाइड होगा ग्रुप ए में तो इन्होंने टॉप किया ना इनका और किससे 1 2 3 4 dot ball to start the over. Jafar Qureshi on strike. Still 46 runs required. Sunil to ball the 17th over. He started off with a dot delivery. This time he's hit it beautifully towards the cover region. 1 run taken and they're running back. Comfortable 2 runs. So that's what they need. They need at least 2 runs a ball from here. The next delivery of the 17th over. This time fuller delivery hit towards long leg. So 1 run. 43 runs, 21 deliveries. Haris Ayaz can also hit the ball long. We've seen that in the previous games as well. Dot ball to follow up. What a brilliant over so far. Just 3 runs of the first 4 deliveries.
and things are getting tougher for Omar Associates. This time another full delivery, big appeal, but importantly only a single added. 42 runs to get of 19 deliveries. This time he hit it straight over the head of the bowler, over the head of the fielder, and 6 runs to Jafar Qureshi, most needed boundary. 107 runs. Now 36 runs required. They needed 42 of 19, now they need 36 of 18. What was 14 runs and over has become 12 runs and over. If somehow they can take it to the last over, 12 runs, 14 runs in the last over with these two still batting, will change the game into the favor of the batsman. Currently, it's still KGA who leads the game. But 2 more lusty blows and things can certainly change around. "107 for 7. Haris Ayaz now on strike, batting on 6. Dominic will bowl his last over for the day. Anything under 10 would be good enough for KGA. He starts off with a loose delivery outside off some wide balls, so the pressure can be seen. If somehow Omar Associates can manage a big over here, anything around 15, 16, they'll definitely be backing themselves to win this game. What a game we're having. We've seen so many ups and downs. This time he used his feet, hit it towards long off. It's wide and it's 4. Sloppy fielding. Every run here counts. It was a bit wide, but the fielder could have stopped it easily. Instead, he just let it go between his legs, through his legs for 4, but a very, very welcome boundary for Omar Associates. They scored 5 runs of the first delivery as the first delivery was bowled wide. This time reverse it and he's connected and it's through again. 4 more runs. Haris Ayaz. We've seen him do it before and he's turning it around again. Omar Associates drew a game before. But if the match is drawn today, in that case, KGA will go through. So Omar needs to win. This time, quicker delivery onto the pads, nudge towards the long leg region for 1. So 10 runs of the first 3 deliveries, still 3 balls to go. And the big over that I was talking about, Jafar Qureshi will definitely be backing himself to hit a boundary. They needed 42 runs of 19 deliveries and now it's 26 of 15. Fuller delivery is hit it towards long on, 1 more run added. So 11 runs of this over, 25 more runs to get of 14 deliveries. We're having a nail biter. We've seen so many ups and downs. First, KGA losing 8 wickets for 80, then they reach 140. This time Haris used his feet and he's hit it towards the long leg region for 1.
So 12 runs of this over already. They still need 24 of 13. But Omar Associates are fighting back. They were down and out when they lost their 7th wicket for 83. This time he's hit it towards mid-wicket but straight to the fielder. One more run added to the total. So 13 of that over. 23 runs, last 2 overs. All 3 possibilities are still possible, as if we go to the last over, tie is also an option and a result. And in case of a tie, KGA will go through. Omar Associates have already tied one match against Omar Enterprises previously. 23 runs, 12 deliveries. Meanwhile, another decider game between Total Energy and Fact Date is currently going on in KCCA Cricket Ground, where they're chasing 136. They require and they need to chase the target before 16.1 overs. And they're 69 for 2 in the 9th over. So still need 67 runs, and they've got less than 8 overs to chase the game and qualify. While Total Energy, even if they lose, but they somehow defend the total till 17 overs, they'll qualify. A very bad and poor delivery to start with, but he's gotten away with it. Should have been 4, but he's got away 2 runs. So 11 deliveries and 21 runs. Jafar Qureshi on strike. Imran is bowler this time. He's got it through to the mid-wicket area. 2 more runs added. 19 runs, 10 deliveries. And what a game we're having. And this time he's connected it, but not well enough. Jafar Qureshi is caught on the mid-wicket boundary. It was the longest boundary. 2s were doing it, but with this wicket, KGA are certainly back in the game. Omar Associates were doing so well. This partnership was of 37 runs. In fact, 41 runs. And they were winning it for the team, but Jafar Qureshi is caught on the boundary. Ayaz Paul was the fielder. शर्ट लंबा सा पकड़ा था शर्ट लंबा है ये नहीं सर शर्ट नंबर 2 था कभी तो ग्लासेस लगा इससे वाला थोड़ा लगा 9 deliveries remaining, and they still need 19 runs. हेलो 8 आउट हो गए 9 बॉलर का 19 हारिस अयाज है इंग्लिश सिटी मार सकते हैं हारिस अयाज और काशिफ एक 6 भी लगेगा चांस भी है ना बैटिंग तो देखा साले में कोशिश नहीं की जहां मैच में दिसे नाम में 4 मैचों में ये मैच हो जाए ना ये वो विकेट कीपर की टेक्निक को आप टेंशन नहीं वो बता बोल रहे थे ना
Nine deliveries, 19 runs. Haris Ayaz on strike, batting on 16 of 10. Kashif is the new man. Haris Ayaz is capable to get these runs, but the question is, can he go all the way? Can he get those boundaries? Short delivery, asking it to get hit, but straight to the fielder. They're coming back for the second, and it was a suicidal run. If they should have run the first time, I don't know why he stopped, but there's another wicket, and now they should have gone for two straight away. 18 runs, 8 deliveries, last wicket. Haris Ayaz is still on the crease. And this is what pressure does. It was easy to. They should have run the first time. Confusion. And in the end, Kashif is out without facing any delivery. Rashid Hanif walking in at number 11. He can even bat. फर्स्ट टाइम भागना चाहिए था और जाफर कुरैशी बड़ी गलती कर गया है 6 के पक्के पक्के 2 रन थे हाँ. पक्के पक्के So it's 18 runs, 8 deliveries, last wicket. KGA completely in control of the game. ये अंडर प्रेशर खेलना है This time they've run the first one hard. Will they come back for the second? Yes, they do. This time, good running. No confusion. They went for 2. So now 16 runs, 7 deliveries. हारिस का वैसे ही दम निकल रहा है हारिस का सही लग रहा है This time, full toss. He's hit it, and it's 6 over mid wicket. We're having a roller coaster game here. It's like a seesaw. One time, the bowling team dominates. The other moment, the batting team dominates. And now it's 10 runs off the last over as Haris Ayaz has hit a 6 of the last delivery. 13 runs of that over. We've seen 2 wickets. We've seen 2 wickets in that over, and with the 6 of the last delivery, certainly it's anybody's game. There's a hurdle for KGA. They're having big discussions. ये तो हारिस यार मैन ऑफ द मैच हो जाएगा अगर 9 runs gets a tie. Tie is good enough for KGA to qualify. 10 runs. Omar Associates qualify. A lot on the stake. Last over to be bowled. अच्छा स्पेल किया है उसने Faraz will bowl the last over. ये निकाल देगा बराज ने 3 ओवर में 11 रन दिए एक आउट किया Faraz was the one who started it all for KGA. 3 ओवर 11 रन He bowled extremely well at the start. He picked up Imran Javed, and he's given away only 11 runs and picked up a wicket. So he's given 11 runs in his 3 overs. He has to defend 10 over here. 9 runs makes it a tie, and tie is good enough for KGA to qualify for the semi-finals. तीसरा आउट हो गया तो वजन पर आउट हुआ टोटल केजीए पहुंच जाएगी ओवर आ गया 50
57 चाहिए 7 over. 57. So now, last over, Faraz to ball the last over. Haris Ayaz is batting on 25. He's off strike. Rashid Hanif is the man on strike. 10 runs to get. Last wicket. They don't have any chance for any error here. If that 2 runs were taken, things would have been different. Then 9 runs would have been required with 2 wickets in hand. How much will that 1 run and an extra wicket cost Omar Associates? There was also a missed field that went for boundary in 2 overs ago. How much will that 4 runs cost? Every run counts here. 10 runs, 6 deliveries, last wicket. Rashid on strike. Faraz is the bowler. He also hit a 6 in the last over. Faraz hit a 6 in the last over. Will that also matter as 10 runs are required? Faraz hit a 6 in the last over while batting. Can he defend 10 in the last over? Rashid Hanif on strike. Faraz to bowl the first ball of the last over. This time he's connected and he's caught straight to cover. KGA has won the game. What a match we had. What a game. Faraz has won it for KGA. It is entirely a team effort. What a game we've had. KGA, they were 83 for 8. They managed somehow 142 thanks to the 59 run stand for the 9th wicket. Ram Ravi scored 100. And then KGA have bowled brilliantly. Victor, Faraz and Imran all picked up 2 wickets each. Mario, Dominic, Ayaz Paul picked up 1 wicket each. And a sorry scorecard for Omar Associates. They've made a mess out of a low scoring run chase, but credit goes to KGA for fighting so hard and making it through to the semi-finals. So we'll join you shortly with the match presentation. Meanwhile, Fact Date needs 48 runs in 6 overs to qualify for the semi-finals. Total Energy needs to stop them to score those runs before 16.2 overs. So we'll join you shortly with the match presentation. Till then, stay tuned.
Both teams are requested to come forward. दोनों टीम से गुजारिश है मैच प्रेजेंटेशन के लिए आगे आ जाए. We would welcome our chief guest for the day, Mr. Altaf Aga, one of the most Hello, I'm from the Karachi Omar Associates. And today we had a knockout game between Omar Associates and KGA. What a game we had! A roller coaster game. In the end, KGA won the game in the last over and qualified for the semi-finals. To introduce my presentation party for today, our chief guest for today is Mr. Altaf, former president of Karachi GYMKHANA and chairman of the tournament committee of Ramazan for the tournament as well. We have with us the manager of Karachi Federation, Mr. Leslie Roderick. We have with us Mr. Masroor Mirza, who is a member of MCCA and tournament committee GYMKHANA Ramazan tournament. And we have with us Mr. Jam Nafees, secretary of cricket Karachi GYMKHANA. So we've got a lot of awards today, a lot of special awards, and there's only one man who's getting everything. Grade of 61 and a cash, a sum, man of the match, and you get the special awards in which 3,000 rupees from the KGA management, Jonathan and Clarence, 5,000 from Mr. Leslie, and 25,000 from the chief guest of the day, Altaf Aga, Ram Ravi. Rupees cash award of 2,000, award of 2,000 by Toyota Central Motors, and gift samples of by Ngiti and Candyland, a 3-piece lady suit from Al-Zohaib, and a 50% free voucher. So, in total, $37,000 cash award in total.
Man of the match. Third century, third consecutive century, and the only man to score 3 centuries in the history of Ramazan cricket tournament. He averages 127 in the 4 matches he played. Outstanding performance. After Mubarak, team going Mubarak. Team going Mubarak. Inshallah, after Allah, I'll come and see you guys. And inshallah, I'll Sajam Hafiz to please present the souvenir to our chief guest for the day, Mr. Altaf Aga, a man who needs no introduction. He's done brilliant things for Karachi GYMKHANA, and we will have a group picture now. Congratulations to Karachi Zones Association, and thank you to the presentation party. That's all for today. So tomorrow we'll have the first semi-final, and we'll see you tomorrow.